fall in battle, yet the survivors press on, determined to complete the mission entrusted to them. This is one of the countless untold stories of the Gorkhalis, an enduring testament to their bravery, sacrifice, and unbreakable spirit. Ladies and gentlemen, one huge round of applause for the team of Gorkha Warriors. May I now call upon my panel today? First of all, the director of this movie, Mr. Milan Chamling Rai. Are you here? Chams? Okay. He's a national award winner. Chams is of, a national award winning Nepali film director, producer, whose work has redefined the landscape of contemporary Nepali cinema. Active since 2010, he has directed over 11 feature films that blend emotional depth, cultural heritage, and cinematic innovation. Just like we saw right now, your beautiful cinematography for this movie, it is deeply, deeply appreciated. His storytelling is marked by themes of love, sacrifice, and resilience, which are all rooted in our Nepali culture, and it's become extremely popular with global audience. In 2023, Champ's film Gorkha Warrior made history as the first Nepali language feature to enter the BAFTA Awards, competing for a finalist nomination. It also became the first Nepali film to premiere at the prestigious IMAX Cineworld in London's Leicester Square. His 10th feature, Anjila, was officially selected as Nepal's submission for the 98th Academy Awards, marking a milestone in the country's cinematic journey. Anjila also became the first Nepali biopic to achieve a 100-day theatrical run and ranks among the highest grossing films in Nepali history. Champ is known for his perfectionism and his commitment to elevate Nepali stories on world stage. May I invite Milan Chamling Rai, director, to kindly join us on stage as my panelist. Please, one huge round of applause. Champs. My friend, my next panelist, Mr. Anand Jha, 1998 batch of Indian Civil Service. He took voluntary retirement in 2018. Thereafter, he's been working in the private sector. He was with Walmart, then Blackstone, and now with Visa. He is based in Delhi, but he's traveled extremely worldwide, especially in Nepal. Anand, please join us for panel discussion. Please, one round of applause. General Ashok Mehta. Do I need to actually read out an introduction for General Saab? Not at all. But still then, it's my job. I'm going to now obviously call upon General Ashok Mehta to join us as a panelist. He was commissioned in 1957, joined the 2nd, 5th Gorkha, and is one of the 2 officers in the Indian Army to be trained in both the US and the UK. He has known Nepal since 1959 when he first trekked there and has since notched up 60 trips to the country, out of which 55 are treks inside Nepal. He also boasts of walking 40,000 kilometers. Sir, this is a great achievement in itself. Uh, in the countryside, and it was in fact trekking in Rolpa and Rukum in 1996, from where the Maoist insurgency in Nepal began. For his services in promoting India-Nepal goodwill, he was taken on the board of His Majesty's Gorkha Memorial Trust, as well as the British Gorkha Army Ex-Servicemen Organization. Sir, please join us on stage for the panel. My dear friend, Janak Raj Parajuli, he is the chairperson of Film Directors Guild of Nepal. He is a seasoned filmmaker, director, and producer who has played a very, very vital role in Nepal's media landscape since 1995. He has directed and produced over 100 music videos, several documentaries, and feature films.
He is also a renowned media consultant, having worked on several notable projects such as Duithopa Asu, Dear Zindagi, a popular television series produced in association with the UN, which focused on raising awareness on public health issues like child mortality, vitamin A deficiencies, and others. Similarly, he has directed over 60 TV commercials for corporate as well as many private brands like the Tata. Um, Mr. Parajuri led one of Nepal's most popular satellite television channels, achieving top position in the television rating points ranking. Please, may I request Janakdeep Parajuli with a round of applause to join in the panel. Um, I was also hoping to host Mr. Chitranjan Tripathi. Sir, are you here? Maybe not. And lastly, as our panelist, Deputy Chief of Mission, Dr. Surendra Thapa. He has been a member of Nepal Foreign Service since 2009. He is currently serving, obviously, as a DCM. He's also served at as the permanent mission of Nepal in New York from 2017 to 2021, and at Nepal Embassy in New Delhi from 2010 to 2014, and we've been a long time friends since then. Within the Ministry of Foreign Affairs, he has served in various departments and divisions, including multilateral, bilateral, consular, and protocol. He has led Nepali delegation to numerous regional and multilateral forums and actively participated in their negotiations. He holds a PhD from my own very university, Jawaharlal Nehru University, and a postgraduate diploma in international law and diplomacy from the Indian Society of International Law. He was a United Nations Disarmament Fellow in 2015. Additionally, in April 2015, he received a public service scholarship to attend the Rising Public Leaders Program at the University of Oxford. He has authored 3 books and many, many articles. May I request Mr. Surendra Thapar to join us in the panel? Thank you, all of you, for joining us today. As you all saw, the film we watched right now, on the Malayan emergency of 1948 to 60, it's, I think, referred to as Britain's own Vietnam, except for the fact that, it was a successful counter insurgency operation where the communists were defeated. Many Gorkhas laid down their lives, and to pick up such a topic and to create such a beautiful film, I will first start with director Chams. Please tell us a little bit about the film. How did you plan this film? About the location and the beautiful cinematography, and basically what inspired you to make this film? Uh, Namaste, everyone. सबैजनालाई धेरै धेरै नमस्कार, and I must sincere thanks to the organizer organizing such a wonderful event. Uh, अनि thank you all the distinguished guests for watching Gorkha Warrior. I hope you love it. गोर्खाली भनेपछि यो itself एकदमै बिगेस्ट ब्रान्ड, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो र अझ इन्डियामा त झनै यसको महत्त्व एकदमै बढी छ र बिट्विन नेपाल र इन्डियाको जुन सम्बन्ध छ त्यो
रिलेसन मजबुत हुनुमा पक्कै पनि गोर्खालीको एकदमै ठुलो हात छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा ब्रिज हो गोर्खाली चाहिँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अ, पहिलादेखि नै गोर्खालीको कथा आउनुपर्छ सिनेमामा, हामीले भन्न सुरु गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मनमा थियो मलाई पहिल्यैदेखि। त्यो भएर हामीले झन्डै धेरै वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो टिमले रिसर्च गर्दै गयौँ र फाइनल्ली पहिलो मुभी चाहिँ मलाया वार, जुन अब अहिलेको मलेसिया त्यो बेलामा मलाया भन्थ्यो, एराउन्ड 1965तिरको कथा हो यो। जुन बेलामा नेपालको सबैभन्दा कान्छो भिसी भिक्टोरिया क्रस रामबहादुर लिम्बूको पनि प्लट छ यो सिनेमामा, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र मलाई लाग्छ सिनेमा एउटा यस्तो माध्यम हो जसले समाजको ऐना बोल्न सक्छ, देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ र हरेक इन्डिभिजुअलको कथा बोल्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले गोर्खा वारियर बनाउने निधो गऱ्यौँ र अघि उहाँ म्यामले भनिसक्नुभयो यो पहिलो नेपाली सिनेमा जसलाई हामीले लन्डनको लेस्टर स्क्वायरमा प्रिमियर गर्न सफल भयो र त्यति बेलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले नेपाली सिनेमालाई पहिलो पटक शुभकामना दिएको यो पहिलो सिनेमा हो। लेटर लेखेरै उहाँले बेस्ट विसेस दिनुभएको थियो। त्यसको मतलब चाहिँ गोर्खालीको महत्त्व के हो भन्ने कुरा त्यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ। जस्तै मैले जेनरल साहबको यहाँ त्यो ह्याटमा खुकुरीको ब्याज भएको, आई गेस 5 GR 5 GR या को लगाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त महत्त्व, होइन? शिरमा चाहिँ तपाईँको लगाएर खुकुरी क्रस लगाएर उहाँको त्यो आई थिङ्क अब एभ्री टाइम त्यो अगाडि पनि रहेछ, मैले देखेँ अहिले भर्खरै है ब्ल्याकमा। सो यो जतिको चाहिँ नि यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ, एक्ज्याक्टली मैले त्यही भन्दै थिएँ। जेनरल साहबको लागि एकचोटि तालिया। र यस्ता खालका सिनेमाहरू बनि नै पर्छ र अझ झन् इन्डियन गोर्खाजको त अनटोल्ड स्टोरी कति धेरै होला, होइन? यसमा पनि हामीले वर्कआउट गरिरहेछौँ र गोर्खा वारियर हाम्रो सम्पूर्ण नेपालीहरूको दायित्व हो। यस्ता खालका चलचित्रहरू बनिनुपर्छ, वारियर्सहरूको कथा, र यसरी नै तयार भएको थियो। थ्याङ्क यू। Thank you very much. Thank you very much. I'll move to Anand. He has widely traveled in Nepal, and we particularly invited him because we see a increasing interest of the private sector into the film industry. We also recently have had few productions from the private sector. But first, Anand, tell us, how did you like the movie? And what are the special things you liked about this movie? Not because Champ is sitting next to you, but No, in no. general. Actually, I didn't know that Cam was sitting next to me out there in the crowd also. How did I like the movie? I cried. So if that is some reflection, towards the end, I started crying because it really relates in many ways. Every son who goes out, there is a mother waiting. Every spouse that goes out, there is a spouse waiting at home. So that really related well. I mean, just to start, I started my career from Gorakhpur, sir. So Gorakhpur in UP, and I was the assistant commissioner, and the Gurkha regiment was right there. So I started very early interaction with that. But yeah, no, I like the movie. The movie had the right kind of action in it, and it was very intense. It was not like just loud action. It was very intense. The emotions were very well captured. As soft power movies do the work of branding, private sector spends a lot of money in branding, and this movie does a lot of justice to branding of the pride of Gurkhas, the the courage of Gurkhas. That has been really well pictured. So, Milan, you have done a great work there. So, thank you so much for making that movie. I was just talking to Milan, and I was saying that one thing that we must do about Nepalese cinema is that we must get them on OTT, Amazon or Netflix, because I have lived in many cities and in many parts of the world. There's a Nepali in every city. If you can get it on a OTT in these platforms, Amazon or Netflix, everybody can watch it all across.
they can show it to their friends. And the best part of getting on OTT is that subtitles are available in multiple languages. So even if people don't understand Nepalese, they can see it in English or any other language which they want. So all the best for that. Thank you, Anand. Thank you. तालीको अलि कमी भएको छ फेरि एकचोटि Thank you. Before I move on, अलिकति नेपाली फिल्म जगतको इतिहासको बारेमा भन्छु. I will briefly touch on the history of Nepali cinema. We like Indian film industry. Nepalese film industry has also been rise. Nepali film industry's rise has been slow and steady, but extremely rich in content. Maybe we have produced less movies, but they have been extremely rich in content and depicting the culture. One thing I really liked about your movie, Cham, was the marriage scene. We have completely forgotten our own tales. Thank you for bringing that up. But having said that, let me take you back to 1950s and 60s. 1951, Nepal gets its first film, Satya Harishchandra. It was actually a Kolkata-based production by D.B. Pariyar. Then, sir, we had Ama within a gap of about 10, 12 years in 1964. Then, of course, not to forget Mala Sinha's Maitighar in 1966. Then 17s and 80s was also extremely rich. Manko Baad, Kumari, Sindoor, where my father was also a key part of the film industry and still is. 17s and 80s were about family dramas, I would say. But the 19s, inspired by the Bollywood, was the time of masala films, led by renowned actors like Rajesh Hamal and Nikhil Upreti. But we also had epics like Prem Pinda in 1995, and my father's own production in 2000, Caravan, the Himalayas, became the first Nepali film to be nominated in the Best Foreign Language category at the Oscars. This was 2000. Then 2010, I feel, this is my own analysis, could please correct me if I'm wrong, I think we moved on to realistic character, driven by emotional narratives. We had Loot, Pashupati Prasad. Then this was also the time when we moved to high definition digital technology. Then obviously, by 2010, we had issue-based movies. By the time we came to 2020s, we had uh, movies like Haridai Ko Jutta, Unko Sweater, and the very latest last year, Paran, which spoke about the issue of migration. Labor migration, as all of us know, is one of the most important and crucial issue facing us. Having said this, I will come to Mr. Janakdeep Parajuli, chairperson of Directors Guild. Janakji, how many movies are now being produced in Nepal annually? What kind of joint collaborations can be formed? See, we've had collaborations with other countries. Like Caravan was a joint production with the French. Why is it that we've not had such joint collaboration with India? How do you see this, Janakji? नमस्ते सबैजनामा थ्याङ्क यू म्याम एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले क्याराभान पछि अहिलेसम्ममा जोइन्ट भेन्चरमा हाम्रो नेपाली सिनेमाहरू किन बनेन भन्ने कुरो जुन यहाँले मलाई प्रश्न गर्नुभएको छ त्योभन्दा अगाडि म अलिकति यो हाम्रो नेपाली सिनेमाको अहिलेको वर्तमान अवस्था के छ अलिकति म सबैजनालाई प्रश्न पार्न चाहन्छु अहिलेको करेन्ट सिनेरियोमा हाम्रो करिब करिब 70 देखि 100 वटा सिनेमाहरू नेपाली सिनेमाहरू बन्छ त्यो सिनेमाहरू जोइन्ट भेन्चरमा भने बिल्कुलै नेपालभित्रै बन्ने सिनेमाहरू हो अहिले त्यसरी पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपालको कानुनले गर्दाखेरि हामीले जोइन्ट भेन्चरको सिनेमाहरू बनाउन सकेको छौँ त्यसमा विभिन्न कानुनी जटिलताहरू छ हुन त म यो नेपालमा चलचित्रको कानुन बनाउने
मस्यौदा समितिमा पनि थिएँ। भर्खर मात्रै राष्ट्रिय सभाले हाम्रो त्यो मस्यौदालाई पास गरेको छ। प्रतिनिधि सभा आएपछि फेरि त्यहाँ त्यो यसको छलफल हुने क्रम जारी नै छ। त्यसपछि चाहिँ हामी धेरै कुराहरू अपेक्षा गर्न सक्छौँ। म भन्दै थिएँ 70 देखि 100वटासम्मको सिनेमा बन्ने सिनेरियो छ। यसमा हामीले करिब करिब नेपाली पैसा 3 अर्बको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ सिनेमामा। अनि हिन्दी फिल्महरू पनि यहाँबाट जान्छ प्रदर्शनको क्रममा, र नेपाली र हिन्दी गरेर करिब करिब हाम्रो वार्षिक चाहिँ 5 देखि 6 अरब बराबरको टर्नओभर गर्छ नेपालमा। हामीले सरकारलाई करिब करिब 70 देखि 80 करोड रुपियाँ ट्याक्स पनि तिर्छौँ। तर चलचित्रले पनि यत्रो अर्बौँको कारोबार गर्छ र यत्रो ट्याक्स तिर्छ र भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई थाहा छैन। इभन हाम्रै व्यवसायी साथीहरू होइन, चलचित्रकर्मीहरू धेरैले यो कुरो चाहिँ, यो आँकडा, यो डाटा चाहिँ थाहा छैन। यस अर्थमा हेर्दाखेरि नेपाली सिनेमाको बजार चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यदि तपाईँले राम्रो सिनेमा बनाउनु भयो भने चाहिँ यसको भविष्य एकदमै राम्रो छ। जस्तो औसतमा के हुन्छ भन्दाखेरि सिनेमा बनाउनु हो, फ्लप भयो भने मुनाफा चाहिँ 0 नै हुन्छ, सिनेमाले पैसा कमाउँदैन। तर औसतमा हामीले मात्रै सिनेमालाई औसत रूपमा चाहिँ सफल बनाउन सक्यो भने करिब करिब त्यसले 10% नाफा गर्छ। त्यसै गरी हामीले हिट भन्ने सिनेमा बनायौँ, ल यो फिल्म चाहिँ हिट भएछ भन्यो भने 20 देखि 40% हामी नाफा कमाउन सक्छौँ। अब सुपर हिट नै बनायौँ भने चाहिँ यो सिनेमाले 50 देखि 100% नाफा कमाउन सक्छौँ। यस्तो अवस्था हुँदै पनि सिनेमामा कर्पोरेट लेभलको व्यावसायिक घरानाहरू आएको हिस्ट्रीहरू चाहिँ एकदमै कम छ। म्यामले भने जस्तै निरसा सरले पहिला 1-2टा सिनेमा कर्पोरेट लेभलबाट गर्नुभएको थियो, र अहिले पनि संयोग त्यस्तै जुरेर परान भन्ने सिनेमा पनि कर्पोरेट घरानाबाट बनेको छ। यो करिब करिब 18-19 करोडको व्यापार गरेर सुपर हिट भएको हामीसँग अहिले तत्कालको रेकर्ड पनि छ। अब यो इन्डिया र नेपालको रिलेसन्सको बिचमा सिनेमाले एकदमै सफ्ट पावरको, यो मजबुतीको एकदमै ठुलो रोल गर्न सक्छ। तर अहिलेसम्म दुई देश बिचको साझेदारीमा सिनेमा बनेको चाहिँ मेरो नलेजमा चाहिँ छैन। मेरो नलेजमा हामी प्रयास गरिरहेछौँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर। यसको समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै कुराहरू छ। पहिला त हाम्रो सन्धि नै टिटीको सन्धिको एउटा समस्या देखिएको छ चलचित्रमा। अर्को भनेको चाहिँ कर्पोरेट लेभलमा कर्पोरेट घरानाहरूले यो दुई देश मिलेर गरौँ न भन्ने किसिमले चाहिँ सिनेमालाई सोच्नु भएको छैन। र हाम्रो कन्टेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नबिक्ने पनि होइन। हालसालै मात्रै तेन्जिङ नोर्गेको कथा, माउन्ट एभरेस्टमा चढ्ने तेन्जिङ नोर्गेको कथा चाहिँ अस्ट्रेलियाको सिसा भन्ने कम्पनीले प्रडक्सन गर्यो। हलिउडको एप्पल भन्ने कम्पनीले लगानी गरेर नेपालमै सुटिङ भएको हो। त्यसमा म पनि सहभागी थिएँ अस्ति। त्यो नेपाली कथा हो। अब त्यो नेपाली कथा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिक्री हुँदैछ। त्यहाँ चाहिँ हामीहरूले चाहिँ किन पैसा लगानी नगरेको होला त, किन विदेशीले आएर गर्यो भन्ने जिज्ञासा पनि छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि यो हाम्रो अलिकति बुझाइमा कमी हुनसक्छ। र आजको टपिक चाहिँ मलाई मन परेको चाहिँ विशेष गरी मलाई रुचि लागेको चाहिँ नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन सिनेमाले भन्दा ठुलो अर्कोले काम गर्दैन। त्यसै भएको हुनाले नेपाल र भारत बिचको सम्बन्धका लागि पनि, यसको सांस्कृतिक आदान प्रदानको लागि पनि, भावना जोड्नको लागि पनि हामीले चाहिँ दुई देश बिचको जोइन्ट भेन्चरमा सिनेमाहरू बनाउनुपर्छ। यो सम्बन्धलाई मजबुती बनाउन चाहिँ ठुलो यसले भूमिका खेल्छ। जस्तै 1971मा चाहिँ नेपालमा हरे राम हरे कृष्ण भन्ने सुटिङ भएको थियो। त्यसपछि खुदावा गवा सुटिङ भयो। त्यसपछि बेबी भन्ने सिनेमा सुटिङ भयो। घरवाली बाहरवाली भयो। लभ इन नेपाल भन्ने भयो। त्यसपछि लास्ट टाइम उचाइ भन्ने भयो। र साउथका केही फिल्महरू, दक्षिण भारतीय फिल्महरू पनि नेपालमा सुटिङ भएको छ। यसले एउटा चाहिँ के गरेको छ भन्दा, जस्तो उचाइ भन्ने सिनेमा पछिल्लो समयको सिनेमाले चाहिँ नेपाल र भारतका दर्शकहरूको हामी बिचको सम्बन्धलाई चाहिँ एकदमै जोडेको छ। जति त्यो पहिला हरे राम हरे कृष्णले जोडेको थियो त्यस्तै सम्बन्ध चाहिँ त्यो सिनेमाले गर्यो। त्यसपछि अरू बनेका सिनेमाहरू नेपालमा गएका छैनन्, इन्डियाबाट पनि गएका छन्। र नेपाली फिल्महरू अघि म्यामले भनेपछि दार्जिलिङ सिक्किम र केही पहिला
कलकत्तामा सुटिङ गर्ने बाहेक अन्त बनेको पनि हामीलाई थाहा छैन। र मेरो एउटा अनुरोध चाहिँ के छ भनेदेखि सम्पूर्णमा हामीले अब यसको सुरुवात गर्नुपर्छ, हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। समाजमा सबैभन्दा छिटो हाम्रो एउटा सम्बन्धलाई मजबुती बनाउने सफ्ट पावरको रूपमा सिनेमालाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। धेरै कुराहरू यसबाट आयो कि भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। म्याम, बाँकी जिज्ञासा फेरि एउटा। धन्यवाद छ तपाईलाई शुभकामना, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई शुभकामना। थ्याङ्क यू भेरी मच। We wish Nepali film industry all the very best. General Saab, I come to you. You know, what you've seen in the movie today, that Gorkhas never surrender and are seldom defeated. Even in their dreams, they envision battles. There is no fear in Gorkha eyes. One Gorkha is worth 100 soldiers. Each Gorkha soldier has a story, rooted most likely in the villages of rural Nepal. Gorkha can survive in the jungles without a reinforcement, can survive in extremely dangerous circumstances. I think these were all shown in the movie. I want to hear from you. How did you like the movie? You watched it throughout and your own experience. Please tell us. Thank you, Akanksha. Ambassador Sharma, and very illustrious audience. हमें म सानो हुँदा एकदम सानो हुँदा हाम्रो पालामा हामी कन्टोनमेन्टमा बस्थ्यौँ अनि कन्टोनमेन्टमा एउटा सिनेमा थियो सिनेमाको नाम वेलेस्ली सिनेमा लॉर्ड वेलेस्ली को पालाको सिनेमा त्यो टाइममा एउटा टिकट किने भने दुईटा फिल्म हेर्नु पाउँथ्यो 5 आना 5 आनास 5 आना दियो दुईटा फिल्म हेर्यो दिनभरि त्यही सिनेमा भित्र बस्यो है चाम साहब को फिल्म को लागि एउटा फिल्म को लागि दुईटा टिकट किन्नु पर्छ एक जनाले किनकि यो फिल्म जहाँसम्म मलाई ज्ञान छ गोर्खा वॉरियर पहिला कुरा तो गोर्खा is spelled with a U ब्रिटिश किनकि तिनीहरूले गोर्खा भन्दैन तिनीहरूले गाखा त गाखा भन्दाखेरि यु लाग्छ इनको फिल्ममा पनि यु छ किन यु छ इट्स अबाउट ब्रिटिश गोर्खास हाम्रो इन्डियन आर्मी को गोर्खा कहीं भिन्दै छैन मान्छे त्यही हो तर अर्को ब्रिटिश आर्मी और इंडियन आर्मी हमरोले ओर गरेछ गोर्खा गोर्खाली अनि यो गोर्खाको इतिहास यो फिल्ममा धेरै रिसर्च गरिराखेछ यसमा एकदम स्पष्ट कुरा निक्लिन्छ 1.5 महिना पहिला म मलेसियामा थियो अनि मलेशिया को मेनलैंड बाटा एउटा सानो आइलैंड छ उसको नाम हो पेनांग पेनांग आइलैंड में एउटा मेमोरियल बनाएको छ त्यो मेमोरियल गोर्खा ब्रिटिश गोर्खा को लागि बनेको छ इंसर्जेंसी 1948 to 75 76 78 अनि त्यो टाइम में सर जेरल्ड टेम्पलर लेफ्टिनेंट जनरल सर जेरल्ड टेम्पलर ब्रिटिश गोर्खा को कमांडर थियो अनि त्यो इतिहास में काउंटर इंसर्जेंसी को इतिहास में पहला पटक एउटा इंसर्जेंसी लाई जितेको त्यो चाइनीज इंसर्जेंट थियो
त्यो चेनपेङ उनको लिडर थियो अनि त्यहाँबाट आजसम्म कोर्सीले इन्सर्जेन्सीलाई जित्न सकेन त्यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो और तपाईँको जो स्टोरी तपाईँले निकालेछ उसले एकदम स्पष्ट हुन्छ सो अब गोर्खालीको बारेमा उसको बहादुरीको बारेमा हरेक नेपाली गोर्खा को नामको बीचमा बहादुर हुन्छ कहिले सोचेछ तपाईँ बहादुर बिर्क बहादुर गुरुङ तोप बहादुर गुरुङ गिर्जा बहादुर गुरुङ थापा बहादुर थापा किन बहादुर अनि मेरो पालामा म त विलेको मान्छे भयो मेरो पालामा नेपालको नाम लिएपछि एकै कुरा निस्किन्थ्यो के कुरा हो त्यो गोर्खा सोल्जर एकै कुरा त्यो टाइममा गोर्खा सोल्जर अनि बादमा टुरिज्म और ल्यान्डस्केप और अरू अरू कुरा आयो तर विशेष गरी बहादुरीको कुरा हो भ्यालर फर भ्यालर भिक्टोरिया क्रस जसको कुरा गरेको त्यो मेडलको माथि लेखे हुन्छ फर भ्यालर भनेको बहादुरीको लागि सो मिलन चाम्सले जो यो फिल्म बनाएछ यो उसको उदाहरण हो उस गोर्खालीको बहादुरीको अनि त्यो हिरो तपाईँको छोरा हो होइन होइन तर नाम तपाईँ मैले सोच्यो कि कहिले अहिले इन्डियामा भन्छ नि डिनेस्टिक रुल तो यहाँ भी आफ्नो छोरा हालिदिया छ कि तर यो गफाको कुरा हो फिल्म एउटा अर्को मैले नाम सुनेको थियो नेपाली बहादुरीको फिल्म लाउरे तर लाउरे मैले देखेको छैन अतुल ठाकुरले देखेछ भन्छ तर मैले एउटा मात्रै नेपाली फिल्म देखेछ त्यो पनि पोखरामा और 1970 कुन साल हो 73 74 त्यो पहिला कुरो त कोही देख्नु सकेन आँखामा चस्मा लगाएर पनि केही देखेन सुन्नुमा केही सुनेन अनि 2 घन्टा त्यो सिनेमामा बसेर आजको प्रोडक्सनको क्वालिटी गजबको क्वालिटी तो नेपाली फिल्म यो जो उदाहरण इज अफ ग्रेट क्वालिटी एन्ड तर एउटा प्रब्लम के छ भने हाम्रो इन्डियन मुभिज नेपालमा हेरिन्छ तर नेपाली फिल्म इन्डियामा हेर्दैन कसैले किन हो त तपाईँले जोइन्ट प्रोडक्सनको कुरा गरेछ तपाईँले त्यसमा जोइन्ट एक्टर पनि लगाउनु पर्छ नेपाली केटा इन्डियन केटी त्यो पनि ट्राई गर्नुपर्छ किनकि इन्डिया नेपालको सम्बन्ध रोटी बेटीको सम्बन्ध हो होइन सो त्यसलाई मिसाउनु पर्छ अब म धेरै कुरा बोल्नु हुन्न किनकि हाम्रो डिसिएम साहब यहाँ छन् तर ब्रिटिस गोर्खासको बारेमा एउटा कुरा नगरे पनि गर्नै पर्छ त्यो कुरा तपाईँले नाम सुन्नु होला एउटा ब्रिटिस गोर्खाको सिपाही टिम आई गुरुङले 2टा किताब लेखेछ इङ्ग्लिसमा फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अफ नेपाल ब्रिटिश रिलेसन्स एउटा
नेपालीले ब्रिटिश आर्मी को बारेमा अन्याय उस जो गरेको मैले यो त्यो उसको इट्स कॉल्ड आयो गोर्खाली और अर्को फिल्म को नाम हो द गोर्खा ग्रीफ गोर्खा को दुख यो उले पूरा त्यो किताबमा और इंसर्जेंसी जो यो फिल्म को बारेमा छ आखिरीमा यो कुरा after all why are we here why are Gurkha warriors with a U and Gurkha warriors with an O we are here Indians are here Nepalis are here so culture and these films must strengthen India-Nepal relations. And they must strengthen India-Nepal relations because for India, without doubt, the most important country is Nepal in the neighborhood, without doubt. And I will tell you a short anecdote that General Sinha, S.K. Sinha from my regiment, when he was ambassador in Nepal in 1990, he was the ambassador, and late Raja Birendra को पालामा उनी राजदूत थियो अनि General Sinha राज दरबारमा गयो नारायण हेटी दरबारमा अनि राजाले सोध्नु भयो कि इन्डियामा नेपालको बारेमा यति इन्ट्रेस्ट किन छैन सो जनरल सिन्हा टोल्ड हिम होइन सरकार नेपाल तो हाम्रो the Raja Birendra asked General Sinha, why is Nepal not important for India? And General Sinha told him, Hoina Sarkar, Nepal, hamro map ko naksha ko टाउको हो टाउको में पर्चा सब कुरा सब बुद्धि सब कुरा टाउको बाटा निस्किन्छ So that was the reply that was given, and I urge everybody here to spare no effort whatsoever to improve India-Nepal relations. And since we are talking about the Gurkha warrior, this is the greatest moment after seeing this film, and he mentioned about India-Nepal relations on this relations between Indian Army and Nepal Army. Well, this is the moment. The recruitment, Agniveer, 5 साल भयो अहिले भर्ती भएको छैन Indian Army मा Indian Army को गुर्खाली पल्टन को नफरी 40,000 is bigger than the whole British infantry. पूरा infantry British बंदा हमरो 40 battalions in the Gurkhas. And last 5 years, Nepal domiciled Gurkha को एक जना पनि भर्ती भएन किन हो और फिर यहाँ हमरो मिलन जी ले गोरखा वॉरियर दिखाए तो सोचने कुरा हो नहीं so we have to repair this and we means the government of Nepal नया सरकार जो नेपाल को बन्छ मैले सुने छ मेरो अनुमान को मुताबिक अहिलेसम्म अब गरा नमान्नुहोस् अलिकति पोलिटिक्स पनि यसमा करीब भइसक्यो तर हाम्रो left parties, communist parties Nepalमा they have stopped in their 1990 Baburam Bhattray's charter
कि there should be no foreign recruitment. अनि अहिलेको चुनावमा यदि अर्को पार्टी पावरमा आयो अनि हाम्रो शङ्कर दयाल शर्माले हिस्ट्री बनाइराखेछ, बाँकी चेन्ज हुँदै गर्छ तर शङ्कर दयाल शर्मा कहिले चेन्ज हुन्न। कोही एम्बेसडर यस्तो छैन जो दुई पटक गएर फेरि फर्केर आयो। So I am hoping that Shankar Dayal Sharma will revive the Agniveer recruitment because it is the single biggest factor in bonding of India-Nepal relations. Jai Nepal, Thank Jai you, Bharat. General. Thank you very much for bringing up the Agniveer. Before I, move to the closing, I'm going to quickly take some reaction from the audience. And I started 5 minutes late, so I'm going to take 5 minutes from your next session time because we've had audience here who've been with us since last 3 hours, maybe more than 3 hours. I have General Ashok here. General Saab, did you watch the movie? Please tell me, how did you like the movie? Very briefly. Well, it's a brilliant movie, and I have commanded 2 battalions of the Gurkhas, 4-8 Gurkha rifles and 1-8 Gurkha rifles. I can tell you, nothing like the bravery of our Gurkha soldiers. They are the best in the world. There is absolutely no doubt in my mind. Thank you. Thank you very much. Atul is here? No? No. I'll just go on to him. I can see my friend Nehar. You've been very silently sitting here. Please tell us, how did you like the movie? Thank you, Akinka. It's an excellent movie and it's very inspiring also. As General Mehta suggested, that there are differences between Gurkha and Gorkha. So Milanji has made a movie on Gurkha. So I request him to make another movie on Gorkha. So that is from my side. Very well said. Very well said. I'm moving on. I can see our very own Rajendra Ghimire. Ladies and gentlemen, one round of applause for Rajendra Dai, our very own person who's been based in India last 30 years promoting films. He himself has worked in South Indian film, in Bollywood. Dai, how did you like the film? Tapalai kasto लाग्यो यो film? एकदम राम्रो लाग्यो यो फिल्मलाई हामीले 2-3 वर्ष पनि धेरै मेहनत गरियौँ मिलनजीले र हामीले राम्रो लागिरहेछ। अब विदेशमा पनि यो फिल्मको सो हुँदैछ। यो अब अहिले हाम्रो इन्डियामा युट्युबमा आएको छैन, यो नेक्स्ट इयर अरू कन्ट्रीमा जाँदैछ यो फिल्म। थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू। म यता हेरिरहेको छु सरहरू को हुनुहुन्छ। म यता आएँ। आर यु फ्रम नेपाल? फ्रम इन्डिया। ओके, योर गुड नेम? गुड नेम? भोजराज शर्मा। भोजराज जी, हाउ डिड यू लाइक द फिल्म? आपको कैसा लगा? मैंने देखी नहीं। आपने नहीं देखी? ओके ओके, आई एम मूविंग ऑन। See who have found sitting here silently. दाइ कस्तो लाग्यो फिल्म? के अरे दुर्भाग्यवश अनफर्चुनेटली मैले हेर्न पाएन होइन, मैले ढिलाइ पुगेँ। तर आई एम सो इम्प्रेस्ड बाई उहाँको नाम के अरे त्यो जुन आई एम सो इम्प्रेस्ड बाई द वाट यु सेड जनरल मेहता. That was a great insight for me. And I loved you, the way you spoke. And my best wishes to Milan Chams. Thank you, Akancha. Thank you, Dai. Thank you. Thank you for being such a good audience. I'm moving down because I can see Mr. Arun Suvedi. Dai, namaste. When did you come to Delhi? Just yesterday. Movie त हेर्नु भएन? हेरिन। तर गोर्खाको बारेमा 2 लाइन भनिदिनुहोस्। गोर्खाको बारेमा भन्नै पर्यो, तर म चाहिँ जनरल मेहताको एउटा कुरालाई म कोट गर्छु। जुन अग्निवीरमा हामीले पठाउन रोक्यौं, दुर्भाग्यवश त्यो स्टेटको म पनि त्यतिखेर चाहिँ सरकारमा थिएँ, एडभाइजरी रोलमा, कार्यकारीमा थिइन। डाक्टर शर्मा पनि हुनुहुन्थ्यो। यस्तै 1947 को ट्राइपर्टाइट एग्रिमेन्टबाट
चाहिँ नेपालको एउटा मात्रै जुन स्ट्राटेजिक एग्रिमेन्ट हो त्योबाट नेपाल बाहिरिनु एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो रणनीतिक रूपले पनि, किनभने त्यो अनाक्रमण सन्धि पनि हो। र यसको बारेमा चाहिँ अब डाक्टर शर्मा यहाँ हुनुहुन्छ, अलिकति स्ट्रङ लबी यताबाट पनि गर्नु पर्यो। अब नयाँ सरकारले यो कुरालाई पुनरावलोकन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तो चाहिँ मैले टिप्पणी गर्नुपर्छ भनेर लाएर अर्को फिल्म चाहिँ हेरिनँ मिलन। अब म अलिकति ढिलो आएँ, आई एम सरी फर द्याट, बट आई विल डेफिनेटली वाच इट एन्ड गो थ्रु इट एन्ड आई हेभ सम dozier also. I have been in Myanmar for more than 6 months, and I have seen several graveyards over there, where near about 200 or 300 warriors graves are there, and among them, I think 30 or 35 warriors were from my village, from Limbu community. Thank you. Thank you, Arundai. Atul, I'm coming to you for last word. Tell me, you watched the movie entirely. Both of them too. Acha, okay. Just tell me, how did you like it? Excellent. Thank you. Thank you for being such a wonderful audience. And champs, congratulations once again. Our audience seemed to have loved your movie. Okay, I will finally move to our special guest, DCM Dr. Suren Thapa. Sir, soft power has been spoken extensively. Last year, in the first Indo-Nepal trade fair, we spoke on soft power extensively. As you know, the popularity of Bollywood. Just a few weeks back, Mr. Sanjay Dutt was in Nepal, and I was amazed at the kind of reception he got in Nepal. I'm also amazed at the popularity of the South Indian stars, like Allu Arjun, for instance. I was in Chitwan, and most of the young people I met there requested me, can we bring Allu Arjun to Chitwan? He's extremely popular there, and a lot of other stars, of course, very, very popular. Please tell us, what are the ways forward for India-Nepal, joint efforts in this cinema? Thank you, Akansaji, Amber Saab, General Mehta, Janak Sir, Milan Chams, Jha Saab. First of all, I would like to thank PhD Chamber for hosting us for this beautiful auditorium with very beautiful sound system, because I could hear all the words. And the technology you used for recording your video, was also very wonderful. Because in most of the movies, in Nepalese movies, what I find that the voiceover is disturbed by the background music. Background music itself is so loud that you cannot identify the words. That happens, but that was not the case in this movie. So thank you for creating such a technologically superior movie. So when I was told to speak on relationship between diplomacy, soft power, and cinema, I got confused because I didn't know how to connect diplomacy with cinema. But after ruminating for a while, things started becoming clearer. We both talk about people. Diplomacy is also about people. People are at the center. We talk about the people, we tell their stories, we sell their stories. And cinema is also about their stories, of which Mr. Chams has beautifully shown the stories of some Gorkhas. When we talk about Nepal-India relation, we talk about geography because we share geography. But we share not only geography, we share so many things. We share emotion. We share stories like this one. So it's about the emotional map. We should focus more on emotional map, not only on geography. When we talk about geography, then things become complicated. So we should talk about emotional map. We should talk about people. We should talk about their emotion, because emotion doesn't need any border. They cross the border, and that emotion is shared by people across the border. Next, I
I would like to say that cinema is very important mode of social transformation. Policy alone cannot change the social ideology or cannot alone do the social engineering. But when it is backed by cinema and when it is backed by the storytelling of beautiful directors like him, then that can bring social engineering and social transformation. I still remember some movies like Padman that broke the taboo on menstrual hygiene. There was another movie called Toilet Ek Prem Katha. If you remember, so that was also a very beautiful movie, which also helped in social transformation. So that's why I'm saying cinemas are very important means of social transformation. And diplomacy also talks about the social transformation. So I think I was expecting Mr. Jha, who is not here, because we want more of the cooperation between India and Nepal on storytelling through movie, through through dramas, or it could be through documentaries by depicting stories like Gorkha warriors. So by saying this, I would like to conclude for now. Thank you, Akanshi, for inviting me. Thank you very much Thank for your you. patience. Thank you very, very much. Thank you, my panelists. We don't have time, otherwise maybe I could have moved on. But if you all have anything to add for like just 3 seconds, anything, Champs? Anand? Okay, more such movies. One line, Champs. How India-Nepal cooperation in films. One line. Great, great. Janakji? Great, great. General? Gurkha warrior with a O. It's that a film was about to be made called Gurkha by Akshay Kumar. And unfortunately, that film got stalled. And so the Gurkha with a O warrior is still awaited. It's still awaiting. Okay, sir. Suren sir? थ्याङ्क यू आकाङ्क्षाजी अघि मैले भने जस्तै सिनेमा र डिप्लोमेसीको सम्बन्ध त मैले भने तर नेपाल भारत सम्बन्धमा चाहिँ हामीले नेपाली सिनेमालाई चाहिँ भारतमा कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा पनि भारतमा रहेका हाम्रा मित्रहरू अथवा हाम्रा शुभचिन्तकहरू जस्तै पिएचडी च्याम्बर होला अथवा अन्य च्याम्बरहरूले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ किनभने सफ्ट पावर भनेको चाहिँ अथेन्टिसिटी प्रमोट गर्ने हो स्टोरी हामीसँग छ हामीसँग भेन्यू पनि छ नेपालको हिमालदेखि तराईसम्म जहाँ चाहिँ छोटो दूरीमा माउन्टेनको चिसोदेखि लिएर तराईको गर्मीसम्म होस् अथवा पोखराको राम्रो तपाईँको लेक भ्यू हेर्नेदेखि लिएर सबै यो सिनेमेटिक सिनहरू नेपालमा छ त्यसलाई प्रमोट गर्नु पर्यो अघि साथीहरूले उचाइको कुरा गर्नुभयो त्यस्तै त्यस्तै खाले मुभीहरू नेपालमा बन्नु पर्यो कम्बाइन्ड जोइन्ट भेन्चरहरू हुनु पर्यो नेपाली मुभीहरूलाई पनि यहाँ जो नेपाली भाषी दर्शकहरू हुनुहुन्छ यहाँको विभिन्न स्टेटहरूमा उहाँहरूको लागि यहाँ देखाउनलाई के गर्न सकिन्छ कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ थ्याङ्क यू आकाङ्क्षाजी थ्याङ्क यू भेरी मच माई प्यानलिस्ट मैले के देखेँ भने आज हाम्रो जोइन्ट कमन एथनिसिटी कल्चर ल्याङ्ग्वेज यो 3 विधामा चाहिँ हामीले नेपाल र भारत बीचको सहकार्य अगाडि बढाउन सक्छौँ सेकेन्ड थिङ जोइन्ट प्रोडक्सनमा जान सक्छौँ र नयाँ बिजनेस हाउसेसहरूलाई सिनेमामा प्रोडक्सनको लागि हामीले इन्करेज गर्न सक्छौँ थर्ड एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नेपाललाई सुटिङ डेस्टिनेसनको रूपमा
प्रमोट गर्नको लागि म नेपाली दूतावासको विशेष रोलको म रिक्वेस्ट गर्छु. I request Nepal Embassy to play special, role to promote Nepal as a shooting destination for not only Indian films, but for all South Asian films. And once again, thank you a lot. Thank you तपाईँहरूले यसरी यति पेसेन्स राखेर बसिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो. Thank you panelists. Congratulations champs once again, and Jai Gorkhali. I request you all to maybe take just 5-minute break for the next session. Okay, I hand over to Ved Bhai. Thank you so much, Akanksha ji, for very beautifully moderating the whole session. So very well elaborated that how movies can play a very vital role in empowering the soft diplomacy between India and Nepal. I would cite an example like in Sikkim, if people go for a movie shooting there, government of Sikkim offers a subsequent subsidy there. So when we talk about India and Nepal, certainly that could be done. And in recent Nepalese film, we have seen so many actors from southern part of India have been taking part, and these movies are being subsequently popular in Nepali cinema. So thank you so much for taking this matter with utmost importance, because cinema plays a very vital role. When we talk about Bollywood, it reaches through Asia, Europe, America, Latin America, Canada, and across the world. Even if they don't understand language, they understand what movie is trying to say. So thank you so much for making it possible here. अब मैं अनुरोध करूँगा आदरणीय युवराज बराल जी से, जो एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट हैं, और हमारे महामहिम राजदूत जी डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी से वो स्टेज पर आएँ और हमारी इस टीम को फेलिसिटेट करेंगे. एक बार जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि कलाकार सिर्फ सम्मान का भूखा हो सकता है. हम उनकी कला को ना किसी मेडल से, ना ही जो है किसी मनोनय से हम उसको तय कर सकते हैं. सो महामहिम राजदूत जी और हमारे युवराज बराल जी साथ में इस पैनल का फेलिसिटेशन कर रहे हैं. DCM सुरेंद्र थापा जी, लेफ्टिनेंट जनरल अशोक मेहता जी. मेहता साहब की नेपाली इतनी सुंदर है, इतनी मीठी है कि जब वो नेपाली में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि नेपाल के किसी सुदूर गांव से कोई व्यक्ति आया है और वो इतनी प्यारी मौलिक भाषा में बात कर रहे हैं. मुझे लगता है हमें ताली बजाने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए. जल साहब हमारे बीच में एक लिविंग लेजेंड हैं, जिनके जीवन का जो एक्सपीरियंस है हमारे लिए हमेशा लाइट हाउस की तरह काम करता रहेगा. जनकदीप पराजुली जी को सम्मानित कर रहे हैं महामहिम राजदूत जी. मुझे लगता है तालियां सिर्फ एक ही सेगमेंट के लोग बजा रहे हैं. क्या आज हमने लंच नहीं किया क्या? आकांक्षा शाह जी को सम्मानित कर रहे हैं. आकांक्षा जी भले
दिल हमेशा नेपाल के लिए धड़कता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ। अब एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मैं अनुरोध करूंगा। मुझे लगता है कि मेहता साहब को बीच में रखना होगा, तभी फोटो में कुछ जान आएगी। फोटो महामहिम राजदूत जी का सम्मान आदरणीय मोहन कार्की जी कर रहे हैं एवरेस्ट चैम्बर। बिना टोपी के फोटो मुझे लगता है कि सिर्फ ये पूरी नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत वैसे कार्यक्रम तो बहुत देर पहले शुरू हो ही चुका है, परंतु कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसको फॉर्मल तरीके से हम उद्घाटन करेंगे दीप प्रज्वलन करके। हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राजदूत जी हैं। हमारे बीच में नेपाल से विशेष इस कार्यक्रम के लिए फेडरेशन ऑफ नेपालीज चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वर्तमान प्रेसिडेंट आदरणीय चंद्र ढकाल जी हैं। हमारे बीच में एडिशनल सेक्रेटरी आदरणीय मनु महावर जी पहुंचने वाले हैं। हम इस कार्यक्रम के शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों है। हमारे बहुत सारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि कैसे नेपाल और भारत का रोटी बेटी का संबंध है। यहाँ से शादियाँ नेपाल होती हैं, नेपाल से शादियाँ यहाँ होती हैं। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग करने के पश्चात हम भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने नेपाल जाते हैं। उसी प्रकार से नेपाल से लोग पिंडदान के लिए गया जी और बनारस पहुँचते हैं। तो हमारे जो संबंध हैं वो एक रेगुलर डिप्लोमेटिक संबंध से ऊपर कुछ प्रकृति प्रदत्त ऐसे संबंध हैं, मुझे लगता है कि जो सदियों से चले आ रहे हैं। हमारे आध्यात्मिक संबंध हैं, हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, हमारे आत्मिक संबंध हैं, और इसी संबंध का परिचायक इस प्रकार के जो आयोजन हैं। अभी हमने आज इस पहले सेशन में चर्चा की कि कैसे फिल्मों के माध्यम से जो है सॉफ्ट डिप्लोमेसी को प्रमोट किया जा सकता है। आज हम इंडो नेपाल ट्रेड फेस्ट के दूसरे संस्करण के पहले दिन में हैं और पिछले साल एम्बेसी के प्रांगण में हमने ये पहला कार्यक्रम किया जिसमें हमारे महामहिम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान, बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन रहा और पूरी एम्बेसी की टीम के सहयोग से एक बहुत ही सफल कार्यक्रम हमने 2025 में किया जिसमें लगभग 150 एग्जिबिटर्स
और 3 दिन के कार्यक्रम में 20,000 से ज़्यादा का फुटफॉल उस कार्यक्रम में रहा। और उससे भी ज़्यादा चर्चा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रही कि कैसे दिल्ली के अंदर एक भारत नेपाल संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को लेकर एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ। तो आज उसी की पुनरावृत्ति हम इस दूसरे चरण में हैं, दूसरे संस्करण में हैं, और हम थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे बीच में विशेष अतिथि के रूप में मिस अंकिता जायसवाल जी हैं, जो चेयरपर्सन है सस्टेनेबल टूरिज्म उत्तर प्रदेश एंड डायरेक्टर हैं दीप ग्रुप ऑफ होटल से। हमारे बीच में आदरणीय उमेश प्रसाद सिंह जी हैं, प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ नेपाल कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। हमारे बीच में विशेष अतिथि के रूप में हैं आदरणीय दिव्यमणि राज भंडारी जी। आप हमारे पिछले कार्यक्रमों में भी जुड़े रहे, आपका उद्बोधन, आपका मार्गदर्शन बहुत ही प्रेरणादायक रहता है। आप एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, आप नेपाली कांग्रेस से सांसद रहे, और डिप्लोमेटिक रिलेशन में जो है आप बहुत ही प्रोएक्टिवनेस के साथ एंगेज रहते हैं। जब हम बात कर रहे हैं भारत नेपाल संबंधों की, और एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो थोड़ी सी चर्चा एवरेस्ट चैम्बर के बारे में भी करनी मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 1 दशक से ज़्यादा की ये यात्रा है एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, और पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों में इसके चैप्टर हैं, और भारत नेपाल संबंधों में नई ऊर्जा भरने के लिए ये चैम्बर प्रयासरत है। आदरणीय युवराज बराल जी, जो स्वयं लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में बराल लॉजिस्टिक्स के माध्यम से एक बड़ा उद्यम पूरे भारत में कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में ये टीम लगातार दूसरे वर्ष इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रही है। Everest Chamber of Commerce and Industries is a dynamic bilateral business platform committed to strengthening economic cooperation, trade facilitation, investment promotion, and cultural engagement between India and Nepal. Established with the vision of fostering structured institutional dialogue and sustainable cross-border partnership, ECCI serves as a bridge between government, industries, entrepreneurs, MSMEs, and startups, tourism stakeholders, and policy institutions across both nations. So, हमारे बीच में एडिशनल सेक्रेटरी आदरणीय मनु महावर जी पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम इस उद्घाटन सत्र में आपका स्वागत एवं अभिनंदन कर रहे हैं। अब मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट आदरणीय युवराज बराल जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आएं और स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में नेपाल से भारत के लिए महामहिम राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी को भी मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा। साथ ही साथ में हमारे आज के विशेष आकर्षण, विशेष अतिथि आदरणीय मनु महावर जी, एडिशनल सेक्रेटरी MEA, मैं अनुरोध करूंगा कि आप स्टेज पर आएं और आसन ग्रहण करें।
विशेष अतिथि के रूप में मिस अंकिता जायसवाल जी, चेयरपर्सन सस्टेनेबल टूरिज्म उत्तर प्रदेश। मैं अनुरोध करूंगा आप भी स्टेज पर आएं और आसन ग्रहण करें। आदरणीय अतुल ठाकुर जी, सीनियर सेक्रेटरी इंडिया नेपाल सेंटर, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे साल भर के विभिन्न कैलेंडर में, विभिन्न महीनों में भारत और नेपाल दोनों जगह विशेष प्रकार के वो आयोजन करते रहते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ अतुल ठाकुर जी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में विशेष रूप से नेपाल से पधारे आदरणीय दिव्यमणि राज भंडारी जी, पूर्व सांसद, और विशेष रूप से अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से हमारे बीच में पधारे आदरणीय चंद्र ढकाल जी, वर्तमान प्रेसिडेंट एफएनसीसीआई एंड चेयरमैन आईएमए ग्रुप। एक बार जोरदार तालियों के साथ देखिए हमारे सभी अतिथि अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के बावजूद अपना महत्वपूर्ण समय लेकर हमारे पास आए हैं, तो तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और मैं अनुरोध करूंगा इसी क्रम में हमारे बीच नेपाल से इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से पधारे आदरणीय अरुण कुमार सुवेदी जी, एनर्जी एंटरप्रेन्योर एवं पूर्व एडवाइजर रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल के, मंच पर आएं और आसन ग्रहण करें। आदरणीय उमेश प्रसाद सिंह जी, मैं अनुरोध करूंगा प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ नेपाल कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री, जो विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में पधारे हैं, मंच पर आएं और आसन ग्रहण करें। आदरणीय उमेश प्रसाद सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां। अब चूंकि हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, हमारे बीच में आदरणीय चिरंजीवी मरासिनी जी हैं, जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय चिरंजीवी मरासिनी जी, मुझे लगता है कि वो सभागार में नहीं है, सो हम इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से अब प्रारंभ करेंगे। मैं महामहिम राज्यपाल जी से, आदरणीय मनु महावर जी एवं संपूर्ण हमारे अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को जो है दीप प्रज्वलन करके जो है हम शुभारंभ करेंगे। स्वस्ति वाचन प्ले कर दीजिए।
अध्यक्षता कर रहे चूंकि कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन के माध्यम से विधिवत शुभारंभ हो चुका है, अब हम कार्यक्रम को दोनों राष्ट्रों के राष्ट्रीय गीत के साथ आगे बढ़ाएंगे। पहले भारत का राष्ट्रीय गीत बजेगा और उसके पश्चात नेपाल का राष्ट्रीय गीत बजेगा। मैं अनुरोध करूंगा टेक्निकल टीम से। आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट आदरणीय युवराज बराल जी को स्वागत मंतव्य के लिए मैं अनुरोध करूंगा। आदरणीय युवराज बराल जी। धन्यवाद। आज हम इस पीआईडी चैम्बर के ऑडिटोरियम में नेपाल और भारत से पधारे हुए संपूर्ण मान्यजन, आज के मुख्य अतिथि हमारे महामहिम डॉक्टर शंकर शर्मा जी और हमारे संपूर्ण डाइस में बैठे हुए डिग्निटीज जी, तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, सभी को इस कार्यक्रम में पधारने के लिए तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ पर नेपाल और भारत के बीच का हजारों हजार साल पुराना सांस्कृतिक रिलेशंस, व्यापारिक रिलेशंस, धार्मिक रिलेशंस को जोड़ने के लिए फिल्म के माध्यम के द्वारा, सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा, व्यापार, ट्रेड प्रमोशन, ट्रेड एक्सचेंज के द्वारा यहाँ पर आप सभी ने आकर इस फेस्टिवल को सुदृढ़ बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए जो आए हैं, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं।
हम भारतवर्ष में और नेपाल वर्ष में हिमाल से लेकर गंगा तक, रोटी बेटी से लेकर धार्मिक, सांस्कृतिक और खून खून का रिश्ता, जैसे माँ बेटी का रिश्ता बोलते हैं, उससे भी बढ़ के हजारों हजार साल पुराना रिश्ता को और मजबूत सुदृढ़ बनाने के लिए ये हम लोग ट्रेड फेयर के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिल्म फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल, ट्रेड फेयर करते जा रहे हैं। ये दूसरा फेस्टिवल है हम पीएफडी हाउस में कर रहे हैं। इसमें हमारे सीनियर सेक्रेटरी अतुल ठाकुर जी का बहुत बड़ा योगदान है हम लोग आगे बढ़ाने के लिए। आज हमारे बीच मुनु महावर जी आए हैं, एडिशनल सेक्रेटरी एमईए से, और तमाम नेपाल और भारत से बहुत सारे लोग इसमें सजग होकर सहयोग और सक्सेस बनाने के लिए आए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को भविष्य में भी प्रोत्साहित करने के लिए मैं आह्वान करता हूं। दोनों देशों के सरकारों को, नेपाल एम्बेसी को, नेपाल टूरिज्म बोर्ड को, टीपीसी नेपाल को, प्लस संपूर्ण मान्यजन को, ये भारत और नेपाल के व्यापार, सांस्कृतिक, धर्म और फेस्टिवल, कल्चर सभी को जोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए निरंतर सहयोग देंगे, ये आशा रखते हुए मैं मेरा 2 शब्द यहीं टूक देता हूँ। धन्यवाद सभी को पधारने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय नेपाल, जय भारत। Thank you so very much, Mr. President, for emphasizing on better India-Nepal relations through movies, cultures, events, and whatever is possible between us. So, without wasting any further time, I would like to welcome Mr. Atul Thakur, Senior Secretary, India-Nepal Center, PhD Chamber of Commerce and Industry, who is a very vital personality in strengthening Indo-Nepal relation. Let's hear him out, Mr. Atul Thakur. A round of applause for him, please. Thank you very much, Vedji. With immense pleasure, on behalf of PHDCCI, sir, welcoming you. This is your first visit. Ambassador Munu Mahavar, who needs no introduction for sure. Ambassador Manjeev Singh Puri is traveling, so he's not here. On His Excellency Ambassador Sankar Sarma, who has been like a guardian for India-Nepal relations in recent years especially. Sir, it's always a pleasure to have you here at PhD House. And all the distinguished fellow speakers who are on the stage, especially including Chandra Dhakal sir, who is the president of Federation of Nepalese Chamber of Commerce and Industry. You will be amazed to know that when we entered into collaboration with FNCCI, one fine morning I tweeted about one of our activities in Kathmandu, and a gentleman who happened to be the former Secretary General of FNCCI, Mr. Jagdish Agarwal, he answered my tweet saying that in 1986, we entered into an MOU with PHDCCI. So our work with Nepal is so old, so permanent. And when I joined these organizations, because I hail from Bihar, Madhubani, Bihar, at personal level too, I'm deeply connected with Nepal, and professionally too, because I went to BHU for my education, political science department, which produced more than 7 prime ministers to Nepal. So in 2017, we started a think tank called India-Nepal Center, and after that, we gave extra focus on Nepal because we really thought that something was missing. And we tried bridging the gap, not just through our activities, but through collaborative efforts. In Nepal, we have association with FNCCI, CNI, Nepal Chamber, Birgan Chamber, Chitwan Chamber, and now we work very closely with Everest Chamber as well. In the president, Mr. Baral, we found a real gentleman visionary who is spearheading a wonderful, campaign, kind of campaign. Because when it's about PhD, it's a 121 years old organizations spanning in all 29 states of India. And I also happen to take care of State Development Council, another think tank which takes care of state chapters. The Everest Chamber is basically drawing the business interest of MSMEs, traders, and also now the mid-sized companies.
So last year we attended the program at Embassy, and we thought that this can be scaled up. This year we had a chance of collaboration, and we entered into a kind of partnership. And this will not stop here. The primary aim is to bridge the gap, because oftentimes, in my book, Kathmandu Chronicle with Ambassador Kavirajan, we wrote a subsection called Too Close, Too Far. This is the reality of our relationship. So we would not like to continue with that, dichotomy, and would like really India-Nepal relations to flourish in real sense. So bridging the gap has been our aim, sir, and we'll do everything possible to take the mission forward with the support of all who are present here. A little bit brief about the film. In recent times, we had seen that Nepalese film industry had entered into kind of saturation, because I also watch Nepalese film. I have fairly good understanding of Nepalese language. Can't speak. That is the only limit I have every time when I have to speak on an occasion like this. So it dates back to Johnny Mera Naam Mahan, then Hare Rama Hare Krishna, Khuda Gawah, Coz, Rishi Kapoor's film, then Banarsi Bhau by Govinda. So many films. Recent times, Baby. But I don't think these are really a staggering number. We need to do much more in terms of promoting the films. And films should get an industry tag. We had seen a great film today, Gurkha Warrior, which is still a kind of pride in all of us, those who are from Nepal or those who love Nepal. I'm one of them, that a person who always thinks about Nepal, and for obvious reasons, professionally as well as emotionally and organically, because being an Indian, proud Indian, we have to think about Nepal. General Mehta has said a wonderful thing today, that Nepal holds utmost importance for India. I mean, the most important country for India is Nepal. So is true for Nepal. India happens to be the most important country. In this positive spirit, I think we should work, and in close tandem with the government and industry. We have the shared vision for prosperity, be it industry or any other matters. Another 2 days, we will also see multi-sectoral exhibitions, which will start in a short while from the late evening today. So we'll invite you to also visit tomorrow and day after. And once again, I am welcoming all of you on behalf of PhD CCI. India Nepal Center think tank exists here. If you have any query, any kind of collaboration, I mean, is in your mind, we are forthcoming. We are welcoming to that. Thank you very much. I will stop here because we have illustrious speakers who are waiting. Thank you very much once again. And after this, we will have networking dinner. We will request everyone to stay back. Thank you. Thank you so much, Atul Thakurji, for your kind words. And now I would like to invite Ms. Ankita Jaiswal, Chairperson Sustainable Tourism Uttar Pradesh and Director Deep Group of Hotels. A round of applause for her. Please welcome Ms. Ankita Jaiswal ji. Good evening, respected dignitaries and dear friends. For me, it is just not an honor but a responsibility to talk on a potential and beautiful partnership between India and Nepal, where we all know that we are not only binded together or connected together by geography, but by culture, trade, civilization, faith, and so many family ties. A few changes into what was said about me as a position. I am chairperson for sustainable and responsible tourism and water conservation for UPHR and HRNI, which covers northern India. I'm a third generation hotelier and a passionate Indian who feels that our neighboring countries and us can prosper together. And no other better example than a living partnership with Nepal, where thousands of people cross the borders for pilgrimage, for education, for healthcare. And this itself is such a sacred opportunity for us representing sustainable cooperation. When I talk about sustainability, I feel that it finds the basis of today and tomorrow, because we can't forget the Himalayas that connect us, and to take care of it, we need to take care of and work on zero waste pilgrimage corridors, green certification for hotels, because pilgrimage becomes one of the very important factors that bind us together. Beyond that, since I represent the hospitality industry, I feel that all the hotels, including mine and others, are
frontier ambassadors, where you witness the food first, the craft first, the culture first. So whether it is the cross-border foods or the craft, uh, I have been literally been trying my best, and of course, respected Dr. Shankar has been a motivator in this of taking it forward and encouraging it. That if every hotels nearby borders and at in a country incorporate our crafts, our food in your hotels, then it will not only make it look beautiful, but it will empower our artisans and farmers. And for me, for both our countries which are beautiful in their own ways, हमारा खुद का खाना और हमारा क्राफ्ट हमारा सोल है कंट्री का. तो जितना हम उससे, yes, please, round of applause for that, because I think we really underestimate the power of our culture, of our food. And because of so, I was able to introduce Nepalese food in my hotel in Lucknow and encourage, yes, so everybody traveling at the airport and different hotels are able to have that and have that taste of traditional recipe. Because आप किसी कंट्री में जाके वो जगह को एंजॉय कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस डेस्टिनेशन लाइक पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, दे आर सेक्रेड, दे आर स्पिरिचुअल एंड कल्चरली बाइंड. बट उसके बाद आपको खाने की ज़रूरत पड़ती है. और जब आप खाना टेस्ट करते हैं और अपने जगह में वापस जाते हैं, आपको लगता है ओ दैट्स द फेवरेट नेपलीज फूड. सो दैट इज़ व्हाट आई वांट, कि चाहे आपके कपड़े हों हॉस्पिटैलिटी में, बिकॉज दैट्स वेयर आई कम फ्रॉम, बट ये सबके लिए है, चाहे हम इंडियन हों, चाहे हम नेपलीज हों, कि हम बहुत प्राउडली अपने क्राफ्ट कल्चर को आगे ले जाए. And because sustainability is my core value system, believe me, I'm a third generation hotelier, and I take this as a responsibility because I've seen properties growing up, taking ahead your craft and culture ahead. So when I talk about sustainability, I also mean that it is so beautiful that connections जो important होते हैं वो human connections होते हैं, और वो इंडिया नेपाल में बहुत strong है. I'm sure there are so many family ties. Plus बिकॉज ऑफ हॉस्पिटैलिटी जो वर्क फोर्स होता है, जो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जो कल्चरल प्रोग्राम एक्सचेंज होते हैं बिटवीन होटल्स एंड इंडस्ट्रीज, दैट प्ले अ ह्यूज रोल. बट टेकिंग इन कंसिडरेशन that today and tomorrow both India and Nepal has to work on sustainable prospects, because you see the fragile Himalaya binds us together. तो अगर हम पशुपतिनाथ जाएं या काशी विश्वनाथ जाएं तो हम ज़ीरो वेस्ट को ध्यान में रखें. हम अगर किसी भी ब्यूटीफुल सिटी पे जाके कहीं पर भी कंट्री के, तो वेस्ट, क्राफ्ट और रिस्पेक्ट फॉर द आर्ट एंड क्राफ्ट एंड आर्टिजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Everything can be said in terms of numbers, but I feel when it comes to India and Nepal, it's very emotional. It's the biodiversity that connects you. It's the thought process. It's your belief system that connects you, which has grounded us and brought all of us together for years and centuries. So I really feel that this historical friendship grows, and it can only grow when the future, the generations of today and tomorrow, understand it and take it. So I'll just end by saying कि एक tradition था जिसको because of Dr. Shankar Prasad sir and everybody else, tradition को हमने transformation के stage पे लाए हैं. एक connection को हम एक collective prosperity पे लाए हैं, और इसको continue करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हिसाब से growth और prosperity तभी है जब वो collective है. जय हिंद and जय नेपाल. Thank you. Thank you so very much, Ms. Ankita Jaiswal ji. You have literally lightened up the issue that how important India-Nepal ties are and what best could be done onto this. So let's welcome Mr. Umesh Prasad Singh, President of Federation of Nepal Cottage and Small Industry. Please give a big hand to him, Mr. Umesh Prasad Singh ji. धन्यवाद. कार्यक्रम में उपस्थित सभी
नेपाल और भारत से जुड़े हुए संपूर्ण महानुभाव को सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष बराल जी, कार्यक्रम के प्रमुख केंद्र बिंदु नेपाल के महामहिम जो यहाँ विगत वर्षों से अपने लोकप्रियता कमाए हुए हैं, डॉक्टर शंकर शर्मा जी, भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी जी, और इस मंच पर नेपाल से हमारे साथ आए हुए हैं चंद्र ढकाल जी, और विभिन्न महानुभाव लोगों को सबसे पहले मैं जनकपुर से बिलोंग करता हूं, नेपाल का जनकपुर से, और जनकपुर के तरफ से और नेपाल के तरफ से आप सभी लोगों को फिर से प्रणाम करना चाहता हूं। प्रणाम। मुझे गर्व है आज इस स्टेज सर जो दिए हैं, मैं इसके प्रति इन एवरेस्ट चैम्बर को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे लगता है वैसे हमारे नानी, हमारे भाषा में नानी कहते हैं, वो राजस्थान से बिलोंग करती थी, राजस्थान के महारानी थी उस समय उनके। तो मैं अपने जगह पर इसलिए प्रणाम मैंने आप लोगों को किया कि मेरे ननिहाल नेपाल में नहीं, इंडिया में है ननिहाल। तो मैं अपने ननिहाल में आने जाने में मतलब अपने से बड़ों को प्रणाम करने, हमारे मैथिली कल्चर है और प्रणाम करना चाहिए। हाँ, इसलिए मैंने अपने ननिहाल के लोगों को, मैं अभी भी जाता हूँ राजस्थान में तो बहुत मुझे सम्मान मिलती है, क्योंकि मैं जनकपुर से बिलोंग करता हूँ। एक कैसा रिलेशन है, अयोध्या से हमारे मतलब भगवान राम का शादी जनकपुर में हुई, और अभी भी हम लोग उस जो शादी हुई त्रेता युग में, लेकिन हर एक वर्ष हम लोग विवाह पंचमी के दिन, विवाह पंचमी में अभी भी अयोध्या से, हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, अयोध्या से हर एक वर्ष बारात के रूप में जनकपुर जाती है, और जनकपुर में हम लोग वही सत्कार करते हैं जो उस समय किया गया था, ऋषि मुनियों ने उस समय सत्कार किया था। आज उनके अवयव में हम लोग, उनके अनुपस्थिति में हम लोग सत्कार करते हैं, और प्रत्येक 5 वर्ष में बड़े पैमाने में यहाँ के विश्व हिंदू महासंघ और भारत सरकार के उत्तर प्रदेश से मैं अनीता जी को भी निमंत्रणा करना चाहता हूँ। भारत सरकार के यहाँ वरिष्ठ लोग हैं, मैं उनको भी निमंत्रणा करना चाहता हूँ। इस बार तो विवाह पंचमी चली गई, आने वाले वर्ष में प्रत्येक 5 वर्ष में बड़े पैमाने में यहाँ से साधु संत और गवर्नमेंट के, उत्तर प्रदेश के कोई न कोई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और भारत सरकार के कोई न कोई बड़े ओहदे वाले रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उसको संपत राय और पंकज जी उसको डील करते हैं। मुझे गर्व है इस बात से कि मैं जनकपुर से हूँ, और बहुत सारे बात आप लोगों ने, सबसे पहले तो मैं मिलन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने नेपाल और भारत की रिलेशन में, और जिस समय गोरखा रेजिमेंट और गोरखाली को लोग बहादुर कहकर कहते थे, मुझे बहुत हर्ट करता था। बहादुर नेपाल के लड़के लोग, नेपाल के लोग जब यहाँ काम करने आते थे, यहाँ किसी भी पद में रहते थे, तो उस समय बहादुर कहकर कहता था, तो मुझे बहुत हर्ट करता था। मैंने उन लोगों से कितनी बार डिबेट किया कि आप बहादुर को अपभ्रंश मत कहिए, आप साहसी का एक केंद्र बिंदु है। सो इस बात को आप गौर कीजिए। मैंने इस बात को मतलब अपने स्तर से, मैं वैसे नेपाल भारत मैत्री संघ का महासचिव 1981 से हूँ। भारत सरकार से बहुत नज़दीकी रिलेशन है हम लोगों का, नेपाल भारत मैत्री संघ का। भारत सरकार के इंडियन एम्बेसी हैं हमारे यहाँ, उनसे भी अच्छा ही रिलेशन है। तो इस रिलेशन को प्रगाढ़ करने में जो मिलन जी ने एक जो आज फिल्म प्रस्तुत किया था, मैं चाहूँगा
उसको जगह जगह पर भारत सरकार के जो हमारे डिप्लोमेटिक विंग से इस रिलेशन के उस समय का रिलेशन को अभी और इसको प्रगाढ़ किया जाए। हालांकि भारत सरकार के यहाँ एडिशनल सेक्रेटरी जी हैं, इसको प्रगाढ़ता के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन खामियां भी हम लोगों में अपने में है। जो अशोक मेहता जी ने तभी बताया कि मतलब जो 5 वर्ष से विगत जो हम लोगों का एक इतिहास रहता था कि जो कि मतलब भारतीय में गोरखा रेजिमेंट का कर रहता था, सो नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कमी हम लोग महसूस कर रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं नेपाली में उसको कहते हैं नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ, आप लोगों को जानकारी करावे कि हम लोग लगभग 40 लाख लोगों को रोजगारी दिए हुए हैं हम लोग, उसमें 10 लाख लोग आपके भारत के हैं। मुझे कहने में गर्व लगता है। और सीजनल बेसिस में हम लोग 6 लाख से 7 लाख लोगों को यहाँ से रोजगारी देते हैं, जो जैसे कि ईटा भट्टा हो, गारमेंट्स उद्योग हो, सोन चांदी का मार्केट में हो, हम लोगों ने देते हैं और कोई भेदभाव नहीं है। मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि आप नेपाल में आओ, हमारे नेपाल के लोग भी यहाँ आते हैं और यहाँ के लोग काम करके जाते हैं, अपने विभिन्न पेशा में आते हैं। तो ये जो बेटी रोटी की संबंध से ही नहीं, हर एक किस्म का संबंध है भारत और नेपाल के। इस संबंध को हम लोग प्रगाढ़ता पूर्वक आगाड़ी बढ़ावे, इस संबंध को और अच्छा से अच्छा हम लोग अगर कायम कर सकें तो हमको लगता है विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है, विश्व में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो और नेपाल और भारत का जो रिलेशन है सदियों से चलते आ रहा है, कोई ऐसा देश में नहीं है। मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा आप लोगों को, मुझे गर्व इस बात से है कि हम लोग खाना खाते हैं नेपाल में और हाथ सुखाते हैं इंडिया में आकर। बहुत सारे लोग, मैं भी उस समय का जिम्मेदार हूँ, मुझे भी इस साइड का बॉर्डर साइड में किसी समय हमारे परदादा लोग 22-24 राज्य जब जिस समय नेपाल में था उस समय वो वहाँ के राजा हुआ करते थे, लेकिन उस समय नेपाल और इंडिया का मतलब वो जो सीमाना नहीं था, सीमाना उस समय गंगा नदी तक का सीमाना था उन लोगों के पीरियड में, हमें याद है। और वो जो बताते थे उन हमारे परदादा लोगों का जो है उसमें हमारे बहुत सारे जगह नेपाल से मतलब इंडिया में बहुत सारे जगह, तो जो नेपाल में है उसका तो हम लोग भोग चलन कर ही लेते हैं, और जो भारत में है तो उसको भी हम लोग मतलब हमारे एक चाचा जी को वो भारत में एस्टेब्लिश कराकर उनको यहीं छोड़े हुए हैं। हम कहते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं नेपाल में और भारत में आकर हाथ सुखाते हैं, ऐसा कोई रिलेशन आप अंदाज नहीं कर सकते, विश्व का कोई भी जगह ऐसा नहीं है जो कि ऐसा मधुर ऐसा जो गुड रिलेशन कह सकते हैं। और रह गई बात भारत सरकार के तरफ से भी हम लोगों को अच्छा से अच्छा, अभी हमने बिहार सरकार के अर्थ मंत्री ने उस दिन बजट अपने बजट में काठमांडू से लेकर पशुपतिनाथ से लेकर बैद्यनाथ धाम तक का जो रोड की उन्होंने कल्पना किया है वो रोड की मतलब पास हो गई। 3-4 रोड की उन्होंने बताया, 3-4 काम को ऐसा वैसा रिलेशन का जो उसमें और एक ईंट ऐड करने की बात किया। भारत सरकार के भी बजट में मैंने सुना, यहाँ के मैं भारत सरकार के अर्थ मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए 12 अरब एडिशनल सेक्रेटरी साहब बताएंगे 12 अरब और 54 करोड़ के मतलब जो भारतीय रुपया के मतलब मैंने अगर मैं गलत हूँ तो उसको करेक्शन करेंगे। ये ऐसे सहयोग की राशि देकर हम लोगों को काम करने की अवसर दिए हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे में नेपाल और भारत के बारे में बहुत सारे काम हम लोग करते हैं और इस रिलेशन को प्रगाढ़ बनाने में, इस रिलेशन को दूरगामी रूप में काम करने के लिए जो काम हो रही है उसमें ये आज का ये कार्यक्रम एवरेस्ट चैम्बर ने जो किया है, इसके लिए एवरेस्ट चैम्बर को भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और बहुत सारे बात आने वाले वक्ता लोग अपने बातों में बताएंगे। हम इन्हीं शब्दों के साथ एवरेस्ट चैम्बर को धन्यवाद देते हुए
संपूर्ण अतिथि लोगों को, संपूर्ण महानुभाव लोगों को प्रणाम करते हुए विदा लेते हैं। धन्यवाद। Thank you so very much, Umesh Prasad Singh ji. मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए जो ये विषय आज अभी उमेश सिंह जी ने बताए वो काफ़ी आश्चर्यजनक होंगे कि कैसे कॉटेज इंडस्ट्री से 40 लाख लोग जुड़े हैं और कैसे भारत नेपाल दोनों तरफ के लोग जो है बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही एक अच्छा इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी है। अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप उनकी उम्र से उनकी ऊर्जा का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय दिव्य मणि राज भंडारी जी के लिए। आई डोंट नो उनकी एक्चुअल एज क्या है, पर उनकी ऊर्जा 18 वर्ष से कम तो बिल्कुल नहीं है। आप इतना ट्रैवल करते हैं, हर दूसरे वीक में आपको विश्व के किसी ना किसी कोने में ट्रैवल करते हुए देखता हूं। निश्चित रूप से आप एक प्रेरणापुंज हैं। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे दिव्य मणि राज भंडारी जी का। धन्यवाद उद्घोषक भाइ। आज पुनः एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स इन्डस्ट्रिजको प्रोग्राममा आएर फेरि पारबिच बसी केही भन्नु पाउँदा मलाई बहुत खुसी लागेको छ। महामहिम राजदूत शङ्कर शर्माज्यू, एडिसनल सेक्रेटरी मुनुमाङ्कज्यू, एफएनसीसीआई का प्रेसिडेंट चंद्र ढकालज्यू, अटुल भाई हाम्रा पूर्व प्रधानमंत्री का सलाहकार जी, यज्ञ अरुण सुवेदीज्यू, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट साहब, सबै और यहाँ उपस्थिति भई हामीले हाम्रा होस्ट युवराज बरालजी मार्फत यस ठाउँमा भेट गर्ने, बोल्ने र आफ्नो कुराहरू राख्ने पाउँदा धेरै खुसी लाग्छ र युवराज बरालजीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैजना यहाँ रहनुभएकाहरूले एकचोटि ताली बजाएर उहाँको स्वागत। Basically, I was given a theme in which I had to speak. That's the reason I'll not try to talk outside the topics. I'll try to go to the topics. And you must have noticed in the program, my name is put twice. It means that I'll be speaking a little bit longer than others. I would like to request all of you to be patient and listen to it, because I will talk on facts. I'll try to make it some in English and some in Nepali. Wherever if I can do it in some in Hindi, I will do that too. Okay? Well, ladies and gentlemen, the topics about harnessing the power of India and Nepal friendship. This is very important, and it is both an honor and privilege to reflect today on one of the most remarkable bilateral relationship in South Asia. The enduring and evolving partnership between India and Nepal. When we speak India and Nepal, we are not merely discussing two sovereign states divided by geography. We are speaking of two civilizations intertwined across the centuries. Two societies connected by faith, culture, language, kinship, memory, and two modern nations navigating an increasing complex geographically landscape and scape aspirations for prosperity, stability, and dignity. The theme before us, harnessing the power of India-Nepal friendship through economic diplomacy, regional integration, and people-to-people network, invites us
not only to reflect on the binds of the historical, but also the envision how that shared heritage can be transferred into the forward-looking strategy partnership for the 21st century. The historical continuum, civilization kingship beyond borders. India-Nepal friendship predates the modern international state system. It is rooted not merely in diplomacy, but in the civilization exchange for centuries. Some of the former speaker has already mentioned about Pashupatinath, Ayodhya, and all the things, so I would not like to repeat. But one thing I would like to, when I talk about the history, when we talk about the civilization and culture, I would like to make it remind to all of you. ये रोटी बेटी का बात चलते हैं मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले हमारे देश की सीता अयोध्या आए थे. So when we talk about the religion, when we talk about the history and about the Raman, the नेपाल के बेटी ने इंडिया में आके क्या किया उस सीता जी का जो है वो रामायण से हम लोग अच्छा से ज्ञान कर सकते हैं. The next thing, the Lord Buddha, born in Lumbini, who spreaded the peace, who spreaded the value of integrity of the people, the sacrifice, all the things. It's come from India, but he was educated and he lived in, he was born in Nepal, so don't take it in the wrong way. He was born in Nepal, he was a Nepali, but why he got educated in India. And he spread his Buddhism all over the world, which is respected by all. In similar way, many of the scholars, many of the sadhus who were born in Nepal have gone to Himalayas in Nepal. Who was born in India has gone to Nepal and Himalayas and learned and educated a lot. I've heard that even Modi ji was there for 2 years and he's doing a meditation and learning a lot even in Nepal. I'm not sure, but we have heard about it. So, the ancient kingdoms of Himalaya foothills maintained trade routes, scholarly exchange, and maintained alliance with the Indian plain, reinforcing the shared culture. Now we are talking about in older days, the trade between Nepal, India, and Tibet. So this is what we said, that we had a trade. Along with the trade, we had the exchange of the culture. We had the exchange about the technology of those days during the Malla Kingdom time. The open border of India and Nepal, one of the most distinctive arrangements in the contemporary world, reflects centuries of organic movement, trade, monks, scholars, farmers, artists, and families moving freely across the Himalayan region. Now, this is what we see, but now most of you here are Nepali speaking, living in India. You could be living here, your family have been living here for centuries, for decades, or you are here, still a Nepalese citizen, but living and working in India. I would like to recall, like more people, at one function, after a long time when the Indian Prime Minister, Modi ji, was in the United States and he was addressing the Indian crowd. They could be American, they could be any country, but during the speech, which I always remind me of saying that, the way he attracted and the way he tried to put all Indians with him, the way I really appreciate it. So I'd like to say that आप लोग पासपोर्ट जहाँ का भी हो, लेकिन खून तो हिंदुस्तानी है. वही हिसाब से मैं आपको कहता हूँ, आप लोग जहाँ का भी है, जो भी पासपोर्ट है, जैसे कुछ भी है, लेकिन आप लोग का खून नेपाली है. So we all have to be together. We all have to work together. We have to live together, and we have to help each other. So this talking about the bilateral trade, the bilateral culture, whatever the Everest Chamber of Commerce is trying to do is fantastic to revive this thing. Now, secondly, I would like to
make it very, very clear to you and our Indian government officials to Nepalese people living in India is not a migrated people. Some of us, yes, but for centuries, Nepali-speaking people has been living in India. In some cases, once the war was lost, the people who are living in those cities were converted as an Indian citizen. Like we talk about the Darjeeling, we talk about Uttarakhand, it was like that. And similarly, the Nepalis had been living in a different places like Assam and several northern states and contributed a lot for the development of those areas. In the major cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore, and Varanasi, and many other places Nepali has been living. You all must be known very clearly that many people, even from the Kashmir, you may not find them in Kanyakumari. But the Nepalese people, you will find from Kashmir to Kanyakumari, from Brahmaputra to Kerala. So Nepali people, Nepali speaking people, they have been helping a lot. They have been working and contributing for the social, economic, and political work in India a lot for a long time. Now, secondly, the merger of Sikkim in 1975 to India by the referendum, which has further strengthened the bond. Nepali speakers from the largest linguistic group in the state remain central to this culture and political life. You know, politically how Sikkim has been developed, economically how it has been developed, stability in the peacefulness in the country, in the state, which has clearly shown that how, if when the Nepali people are ruling, how they could run the government, how they could bring the development in the state. So this has been one example. Now, we saw the movie about the Gorkha warrior. So we should know this movie was the Gorkha warrior with the Britishers. But simultaneously, what I see that the Gorkha has spread. Gorkha has served India for a long time. During the British time and after 1947 when they separated, some of the battalions were left here and they have served this in defense of India. Many people have died. They sacrificed their life for the safety of India, in defense of India. In any wars, you see, ल भन्नुस् त यहाँको प्रजातन्त्रको लागि यहाँको यो देशलाई बचाउनको निम्ति कति नेपालीहरूले कुर्बानी दिएको छ कम्पेरिटिभली नेपालको प्रजातन्त्र नेपालको आन्दोलनहरुमा अरु देशका मान्छेहरु कसैको छ त्यसैले this is the significant vision what Nepali has given to India and you all should be the proud of it because you are the people who have seen this, who have heard about it and we have inherited it from those families. Now, what I would like to, another thing very important is when the Quit India movement, several Nepalese leaders had got involved in the Quit India movement. Our respected leader, B.P. Koirala, Krishna Prasad Bhattarai, Surya Prasad Upadhyaya, and many other such leaders have been involved here in Quit India movement. For the independence of India, Nepalese political leaders, several political leaders has worked, sacrificed their life. So see, for the democracy, for the economic development and social development, what Nepalese-speaking society has been doing in Nepal. Now, besides that, when we talk about development, you see, besides the defense services, tea plantation, the technology, what
Nepali people had done in Darjeeling and Assam, all those things is very, very remarkable. Similarly, the agriculture in terrain area, the technology what Nepali brought in northeast about the agriculture in the terrain area and animal husbandry. तपाईँहरू आसामतिर जानुभयो भने सब नेपालीहरू खुट्टीवाला खुट्टीवाला भन्छन् हो बर्मा गयो भने यहाँबाट पनि त्यही हुन्छ excuse me, I'm going on the subject. If you think that I should not go, then I'll stop it. You invited me to speak on the subject, so I'm starting. I had clearly mentioned that I need 30 minutes, okay? Now, you know, we should not be considered only as the migrant people. We should be considered as integrated people in India, among the population in India. Now, another very important thing which I'd like to bring to the protest like Nepali daughter, Rajmata late Vijay Raj Scindia. Her contribution for the democracy, her contribution for the establishment of BJP, her contribution in defending for the Loktantra in the country. She even went to the jail. See, and what she got it? Only 100 points. I mean, Nepali bolno sakeno. I mean, Nepali आवाज गर्नु सकेको भए उहाँलाई अझ धेरै अनर हुन्थ्यो होला जुन चीज राजमाताले जिनु भएको थियो आज पनि हाम्रो 5-5 जना नेपाली भाषीहरू सांसद हुनुहुन्छ पपुलेसन तपाईहरुको यति थुप्रो छ तर तपाईहरुको आवाज नभएको हुनाले हाम्रो एकजना मन्त्री पनि हुनुहुन्न म यो पटक भन्न चाहन्छु बुझ्नुभयो यो हुनुपर्छ न इकोनोमिक एस्पेक्टमा हेर्नुस् सन्त व्यक्ति बालकृष्ण आचार्य उहाँ फोर्ब्सको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि ही इज वर्थ मोर देन $4 billion उहाँ पनि नेपाली पुत्री हुनुहुन्छ नेपाली मध्येमा सबभन्दा धनी व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँको कन्ट्रिब्युसन आयुर्वेदिक कुरामा उहाँको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीलाई अगाडि बढाएर र पतञ्जलि र योगालाई जुन उहाँले गर्नुभएको छ जडीबुटीको विकासको निम्ति जुन गर्नुभएको छ त्यो बहुत राम्रो कामहरू भएको छ नेपाली हुनुहुन्छ र उहाँलाई के चाहिन्छ उहाँ त सन्त हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो निम्ति हामीहरू जस्तो व्यापारमा आफ्नो निम्ति पैसा कमाउनु भएको छैन तर उहाँ धनी हुन्छ र उहाँको कन्ट्रिब्युसन जुन बालकृष्ण आचार्यजीको छ त्यो छ नाउ व्हेन वी कम टु द टपिक्स यु सी यो मैले अहिले दुईचोटि मलाई टाइम दियो भनेको हुनाले मैले हिस्ट्री नेपालीहरूको कन्ट्रिब्युसन के नेपालीहरूले के गर्नु सक्छ भनेको कुरालाई मैले बताएको अबको हामीले जब कुरा गर्दा व्हेन वी टक अबाउट इकोनोमिक डिप्लोमेसी नाउ द टाइम हेज कम फ्रम assistance to strategic partnership. Now, how we could be together and how we could do work together for the benefit of the both countries. So this is what I wanted to explain to you that Nepal's trade with India is $1 billion. 2/3 of the trade of Nepal is India. We are dependent on that. You see? So we have to have more avenue. We have to have more work between India and Nepal, and we should try to explore for more investment. I'm sure that Atul is trying his best to do it, that more investment in India for the Nepalese companies so that they can re-export, they can produce the goods in India, in Nepal, and re-export to India like Dabur, like other countries like Hindustan Levers and many other companies. Now, we are talking about the harness of water, which is very important. I'm sure tomorrow Arun will and other friends who have come about here will talk about the energy sector. And on top of that, what I would like to mention about is the water is getting problem in some part of India because of the Brahmaputra, our Tista, you know. So, alternatively, we have to think about the management of the water flow for UP and Bihar, for drinking water, for irrigation purpose with the river which are flowing from Nepal to India. This is what we have to,
do. So we have to develop about the proper irrigation system. We have to develop about the waterways, cargoes movement, and the tourism too. Now, we have to go for innovation-driven economic partnership in technology transfer, in skill development partnership, digital payment, startup enterprises, and innovation coordination. It's what if the Nepal and India work together with the Nepalese people and Indian people work together, we can bring, and the Nepalese citizen and Nepali speaking Indian citizen work together, we can innovate a lot of things for the world market, work together. I've seen that there are some Momo companies which are doing very good, and others very good. Now, a very important part when we talk about this partnership is regional integrated, a shared strategic imperative thing. South Asia remains one of the least economically integrated regions in the world. It is a collective potential eminence. I would like to emphasize once more, which I did it last year, is we should have a good corridor for Bharat, Bangladesh, Bhutan, and Nepal coordination. This is what I mentioned in my last speech to last year's program, and today I'm repeating again because our additional secretary here, so in a bureaucratic way, said he could find some ways to do it. Because I spoke to MP the Raju Bista, I spoke to MP Single and all, and I gave my concept document to all. It is very, very important for all of us because the SARC is dying. The concept of SARC on one time was important, but now it is no value. It's just a wastage of the taxpayers' money because no productive thing is coming. So for us, for traditional, for not only for the road connectivity, for the trade connectivity, electricity transmission connectivity, all these things, the BBIN concept has to go in one. And we have to convince with this, we have to go for the several development. It's not only the economic development, we have to think about our security too. With the group countries, security too. Otherwise, it will be very difficult. And I feel that at present in India, Siliguri, we are talking about some of the guys, Siliguri could be a very strategic point for the development, all these things, because Siliguri, it could be a point for the Bhutan, for Bangladesh and Nepal, all these things, and mostly northeastern state where there are a lot of Nepali-speaking people are living over there. So, besides what we now would not like to go on, again, on the culture exchange with all this technology transfer, this all we have already spoken. But we have to be very, very careful about the coming up about the climate change. We have to work together from Himalaya to all the riverside about the climate change, and this is what I feel that. And the most important part, what I see with you today and with all, is people-to-people network. This is very, very important because we have a labor market. We have a huge amount of the labor market for the Nepalese people working in India, and we have Indian people working in Nepal. If you see the remittance data, the more money is coming from India, coming to India from Nepal. So it is the labor market for the both countries are very important. So we have to see about the stretching. Besides that, we have already talked about the culture, academic exchange, all those things, but the tourism is the next point. I'm sure that tomorrow when the friends are talking about the tourism, we'll not only talk about the tourism development of Nepal, but we have to talk about the tourism development and the good corridor in India for the Nepalese citizen also who could come and travel here. Because it has to be vice versa, okay? Now, what I see at the present stage is truly harness the power of India-Nepal friendship. We must move for sentiment of strategy for institutional modernization. Like I said, the Everest Chamber of Commerce, we have to develop. And PhD is helping, so we have to develop an institutional modernization, and we have to see
that this institution could work a lot for the economic development and economic diversification. Now, only few companies are working in Nepal. Secondly, what I see is about the soft power diplomacy and the trust-based dialogue between Nepal and India, between the Nepalese businessmen and between the Indian businessmen. This is a very, very important part. So trust remains the currency of enduring partnership. Well, friends, the friendship is the most important thing. Trust is a very important thing. With the civilization, what we have learned from our religious leaders, from our God and all these things, we in India and Nepal, we are all together. So we have to work together, we have to live together, and we have to plan deeply for the future generation so that they can work, they can live, and they can be happy for the future. Thank you very much. Jai Nepal, Jai Bharat. Thank you so very much, Honorable Dibyamani Raj Bhandari ji. Now we'll move forward with the program, and I would be so happy to invite one and only Mr. Chandra Prasad Dhakal. What an inspirational story Mr. Dhakal has, coming from a very humble background, very normal family, from a village of Baglung called Amlachaur, and making $1 billion empire by the name of IME Group. The guy who made bank accessible to normal Nepalese. A big hand to Mr. Chandra Prasad Dhakal. Thank you. Thank you so much, President Mr. Yuvraj Baralji, His Excellency Ambassador Shankar Sharma, Ambassador to India, His Excellency Munu Maora, Additional Secretary, distinguished guest in the dash, uh, Honorable Dibyamani Raj Bhandari Dai, high official from Government of India and Nepal, distinguished business leader from the both country, Nepal and India, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is a great pleasure for me to be here in New Delhi at the second Indo-Nepal Trade Festival 2026. I would like to thank the Everest Chamber of Commerce and Industries, the Embassy of Nepal, and all the partners for bringing us together on such important platform. Event like this remind us that the relationship between India and Nepal is not only about the geography or history. It is about the people, business, trust, and share the growth. India is the Nepal largest trade partner and one of our biggest source of investment. Our open border, cultural closeness, and the deep family ties make our partnership unique in the world. Today, when the global economy is facing uncertainty, supply chain disruption, and regional tension, it is even more important that neighbors work closely and support each other's growth. The recent Union Budget of the India has placed a strong emphasis on the infrastructure, manufacturing, digital connectivity, green energy, and support to MSMEs. India continued the investment in railways, highways, logistic park, and digital public infrastructure will not only strengthen its own economy, but also create the opportunity for the neighboring country like Nepal.
When the India grow the faster, it creates a demand, supply chain, and investment flow that benefit the entire region. Nepal can connect to this initiative through the cross-border trade, energy, cooperation, tourism circuit, and the joint venture in manufacturing and services. Nepal must align itself strategically with the India rapid economic growth, not as a bystander, but as an the active and capable partner. On Nepal's side, we are also focusing on economic reform, infrastructure development, and improving the investment climate. Nepal has immense potential in hydropower, tourism, agriculture, information technology, manufacturing, and services. We are rich in the water resource and have already started the exporting the electricity to India with the proper transmission line and policy stability. Nepal can become a reliable green energy partner for India. We already have bankable, ready to invest the hydropower project that are waiting for the right partners. Cross-border transmission infrastructure is the key that unlock this potential for the both nation. This is not only about the trade, it is about the long-term energy security and the clean growth for the both countries. Tourism is the another strong area of the cooperation. Nepal offers the natural beauty, adventure, spiritual heritage, and warm hospitality. We are encouraging high quality tourism infrastructure, including hotels, resort, and cable car project in different part of the country. Nepal site at the heart of the South Asia spiritual and pilgrim economy, a market of the hundreds of millions of devotees. We are actively developing a regional cable car circuit connecting key religious and the tourism destination, making them accessible to the visitor of the all age. This is a transformational opportunity for the investor and the game changer for mountain communities. Cable car development is opening up the remote religious and tourist destination, creating the job and attracting the both domestic and foreign investors. Indian investors have already shown the interest in hospitality and tourism projects, and we welcome the more partnership in this sector. This private sector is leading this charge, and the results are already visible on the ground. Investment opportunity in Nepal are expanding. The government has simplified the procedure in the many sector and is working to reduce the bottlenecks. There are the opportunity in industrial park, special economic zone, cross-border logistic, agro-processing, pharmaceuticals, education, and health services. Nepal can also serve as a gateway between the India and China, offering the strategic advantage for trade and connectivity. Nepal in entering an important democratic movement, and the private sector see this as an opportunity, not a risk. We have constantly said that the economic stability and the political stability must move together, and we believe the Nepal is ready to demonstrate exactly that. Elections are a sign of the healthy democracy. What matters equally is that reform continued, spending the remains discipline and the investment
climate stay predictable growth cannot wait for the political cycle to complete. Nepal is actively building a pipeline of bankable project and the long-term partnership. What serious investor need and what we are committed to delivering is constancy, confidence, and continuity. The Federation of Nepali Chamber of Commerce and Industry has been strongly advocating for the predictable policies, responsible physical management, and the private sector lead growth. We are not waiting for the transformation to happen. We are driving it. We believe that both India and Nepal should work towards the deeper economic integration, smoother, smoother customs procedure, better standard alignment, and the stronger digital trade system. MSMEs on the both sides need the easy access to finance, technology transfer, and market information. People to people ties remain our biggest strength. Cinema, culture, education, exchange, and the tourism build understanding the beyond official meetings. When our entrepreneur meet, when our young people collaborate, when our artists perform across the border, the foundation of economic cooperation becomes stronger. The Indo-Nepal Trade Festival is not just an event, it is a platform to convert the goodwill into the business deal, idea into project, and conversation into partnership. Let us use this opportunity to identify the concurrent area of the collaboration, from the green energy to digital service, from tourism to manufacturing. India and Nepal share an open border and an open heart. Our future should also be open, ambition, and the forward looking. The private sector is ready to play its role. With the political will, policy stability, and the mutual trust can take the Indo-Nepal economic cooperation to a new level. मैले अलिकति यहाँ चाहिँ नेपाली आदरणीय व्यवसायी साथीहरू पनि हुनुभएको हुनाले मैले अलिकति सरी एक्सलेन्सी जस्ट आई वान्ट टु मेन्सन विदिन द नेपाली ल्याङ्ग्वेज म यहाँ नेपाली आदरणीय व्यवसायी साथीहरू हुनु पनि भएको हिसाबले मैले के भन्न चाहिँ चाहेँ भने वास्तवमा नेपालमा अपर्च्युनिटी छैन, नेपालको चाहिँ डोमेस्टिक चाहिँ पुँजी परिचालन गरेर केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने जुन एउटा चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भाष्य चाहिँ थियो, त्यसलाई चाहिँ चिर्नको लागि वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो होइन है, नेपालमा साँच्चै सम्भावना चाहिँ छ र नेपालको डोमेस्टिक चाहिँ पुँजीबाट पनि धेरै चिजहरू गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उद्देश्य राखेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एउटा चाहिँ 10 बिलियन नेपाली रुपिजको एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ काम सुरु गऱ्यौँ र त्यो कम्पनीको उद्देश्य चाहिँ के छ भने वास्तवमा नेपालको जुन एउटा चाहिँ नेपालको जुन एउटा अपर्च्युनिटी, चाहे टुरिज्मको सेक्टर भनौँ, चाहे हाइड्रो पावरको सेक्टर भनौँ, चाहे स्टार्टअपको चाहिँ सेक्टर भनौँ, कुनै पनि एरियामा यदि कसैको चाहिँ एउटा इन्टरप्रिन्योर्सले चाहिँ एउटा कुनै एउटा इनोभेसन चाहिँ गर्छ तर उसलाई चाहिँ पैसाको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अथवा इक्विटीको कारणबाट उसको चाहिँ त्यो इनोभेसन अथवा इन्टरप्रिन्योरसिपले चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ सकेका छैन भने वास्तवमा त्यस्तो किसिमको चाहिँ इनोभेसनलाई, त्यस्तो किसिमको इन्टरप्रिन्योरलाई लगानी गर्ने, क्यापिटल इक्विटी इन्जेक्ट गर्ने चाहिँ हिसाबले र सँगसँगै यदि कसैसँग सानो एमाउन्ट चाहिँ भन्नाले पैसा चाहिँ सेभिङ छ तर त्यो पैसाले आफैले छुट्टै व्यवसाय गर्न चाहिँ लाई गाह्रो छ भने वास्तवमा त्यो सेभिङ पनि वास्तवमा त्यो कम्पनी मार्फत एज अ ओनरसिप चाहिँ लिएर अगाडि बढाउन चाहिँ सक्ने यो दुईटै चिजलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर नेपालमा एकदमै सम्भावना चाहिँ छ र नेपालको क्यापिटलले पनि धेरै ठुला ठुला आयोजनाहरू गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर वास्तवमा यो नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भनेर वास्तवमा हामीले सञ्चालन गरेको छौँ। यसको मतलब यो 10 अरब
जुनको चाहिँ यसलाई चाहिँ सिड क्यापिटल मान्ने हो भने करिब 40-50 अरब बराबरको हाम्रो ठुलो आयोजनाहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्ने रहेको छ र त्यही उद्देश्य राखेर वास्तवमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जुन मैले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षको पद चाहिँ सम्हालिसकेपछि वास्तवमा यो काम चाहिँ सुरु गरेर यो अलरेडी अपरेसनमा चाहिँ आइसकेको अवस्था छ। म आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई वास्तवमा यहाँहरूलाई वास्तवमा चाहिँ मैले नेपालको कुरा गर्दैछु, यहाँहरूले केही गर्न खोज्नु भएको छ तर यहाँहरूलाई कुनै इक्विटीको चाहिँ यदि जरुरी छ, यदि इक्विटी फाइनान्सको चाहिँ जरुरत चाहिँ परेको छ भने वास्तवमा त्यो एनडिपीले चाहिँ वास्तवमा यहाँहरूकोमा लगानी गर्नेछ र यहाँहरूसँग चाहिँ सपोज सेभिङ छ, हामी पनि यो कम्पनीको एउटा चाहिँ सेयर होल्डर चाहिँ हुन चाहन्छौँ भनेर यदि यहाँहरू भन्नुभयो भने त्यसमा यहाँहरूले पैसा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले मैले यहाँहरूलाई खास गरेर नेपालमा नेपालकै पुँजीबाट पनि धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा म्यासेज दिनलाई पनि वास्तवमा चाहिँ हामीले त्यो सुरु गरेको कुरा म यहाँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहेँ। अन्त्यमा आई थ्याङ्क यू अल एन्ड विसेस फर द सेकेन्ड इन्डो नेपाल ट्रेड फेस्टिभल 2026 ग्रेट सक्सेस। धेरै धेरै धन्यवाद बरालजी, नमस्कार, थ्याङ्क यू। Thank you so much, Mr. Dhakalju. Indeed, Nepal is a land of immense opportunities, and you are one of the living example of that. There's no doubt about it. There are such hundreds of stories in Nepal, and we should appreciate all of them. And moving forward, I would like to invite Honorable Munu Mahavarji, Additional Secretary, Ministry of External Affairs, who has been supporting this cause time and again. Last year, we've got your advice, your directions, and this year we are equally grateful to have you on stage, and I would like to invite you for your kind words. Honorable Munu Mahavarji, thank you so much. Excellency Ambassador Dr. Shankar Prasad Sharma, President Yuvraj Baralji, all the distinguished dignitaries on the dais, Sri Atul Thakurji, Senior Secretary of the PhD Chamber of Commerce and Industry, dear friends, particularly friends from Nepal who have traveled all the way for this event. At the outset, let me congratulate the Embassy of Nepal in New Delhi, the Everest Chamber of Commerce and Industries, and the PhD Chamber of Commerce, as well as all other partners who have come together to organize this second edition of India-Nepal Trade Festival. I thank all of them for inviting me to this event. I'm really delighted to be with all of you. As it was just mentioned, I had the opportunity to participate in the first edition last year. And earlier this month, I visited the fascinating exhibition organized by Nepal Art Council in collaboration with the Nepali Embassy. I'm happy to note that this comprehensive event that is being organized and that we are inaugurating today, it covers all important themes in our bilateral economic and commercial relationship. So let me first of all congratulate Ambassador Sharma and his team for successful organization of all these events, which have contributed immensely in strengthening our economic partnership and cultural connect between our two countries. I would invite you to join me in giving a big round of applause. Friends, while we meet here today, Nepal is, of course, very actively preparing for the general elections to be held in about 2 weeks' time from now. We extend our best wishes to the people and government of Nepal for successful conduct of these elections. As a close friend and neighbor, India has extended logistical support as requested by government of Nepal. This event also coincides with the ongoing India AI Impact Summit 2026. I hope some of you had the opportunity to visit the expo or attend some of the sessions. As you would have noticed in that setting, the technological landscape is evolving very rapidly. And harnessing these new technologies for growth and development
of people has become a top priority for all nations. In this summit, Prime Minister Modi presented his Manav vision for a human-centric, inclusive, and responsible artificial intelligence committed to the betterment of humanity. Friends, this inclusiveness is at the core of policy making in India, domestically as well as in our foreign engagements. As our leadership has often said, articulated, it is our firm belief that India's growth and development cannot be in isolation. Just now, we heard Dhakalji mentioning this point, how India's growth and development creates new opportunities for its partners, particularly the neighbors. We attach utmost importance to the growth and development of our partners, and firstmost the neighbors. The philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, that is, the whole world is one family, and Sabka Saath Sabka Vikas, they inform our foreign policy engagement. So in line with this approach, specifically vis-a-vis Nepal in recent years, we have jointly undertaken several initiatives that have enhanced connectivity and deepened the synergies and complementarities. While the specifics will be discussed in various sessions of this event, I would like to flag just a few. Our border infrastructure has improved considerably over the years through establishment of integrated checkposts and strengthening of road and rail links. Our transit arrangements, which were always very extensive and liberal, have been further liberalized. We have built cross-border transmission lines that enable us to exchange power in large quantities exceeding 1000 megawatt. During the surplus, during the peak season, Nepal exports surplus power to India, and during the lean season, India supplies power to Nepal to meet its demands and requirements. More transmission lines are being built, and our aim is to scale this up to 10,000 megawatt. We have a fully functional oil pipeline for supply of petroleum products, and we are scheduled to commence construction of a second pipeline in the coming months. And this has, of course, reduced the transportation cost considerably, which was earlier getting passed on to the consumers. Our digital connectivity has improved. The UPI PhonePe QR interoperability project started in 2024 crossed 1 million transactions last year. This has facilitated tourist flows from India to Nepal, and we are now looking at P2P, peer-to-peer phase for UPI and PI very soon. But these are just few headlines. A lot more is happening quietly. We are engaging in new areas of cooperation. In April 2025, a large number of startup delegations from Nepal were represented at Startup Mahakumbh 2025. Last month, I had the opportunity to attend the valedictory session of first INSPAN cohort. INSPAN stands for India-Nepal Startup Partnership Network. In the first cohort, representatives from 24 Nepali startups from diverse sectors such as artificial intelligence, cybersecurity, space, education technology, legal tech, climate tech, agri-tech, solar, etc. They attended an 8-week program at Indian Institute of Technology Madras, IITM Pravartak, which is an incubator at IIT Madras Research Park. This incubation center at IIT Madras is one of the largest deep tech incubators we have, with combined valuation of over $6 billion. So during this program, the Nepali startups, entrepreneurs, they engaged with Indian counterparts, mentors, investors to learn from the India's system, India's experience.
And I'm very happy to inform this gathering that 9 of these 24 startups have received incubation and investment offers from within the IITM Research Park. This is really a great beginning. 9 out of 24 have received investment and incubation offers. So given the strong interest and response, we are now planning to launch the second edition very soon. And we are also ready to work with our Nepali friends to support their own efforts to create a similar startup ecosystem in Nepal. We are working together to enable greater interaction among our youth leaders across fields. And I am happy to see that a session has been devoted to this particular area. And I really look forward to receiving the suggestions that will come out of this session. And there are many other areas where the potential has not been fully realized. Previous speakers have alluded to it. Chandra Dhakalji in his address mentioned several opportunities that exist and how we can work together to tap those opportunities. The foremost among these areas where we have not really fully realized our potential are hydropower and tourism. In hydropower, we have made significant progress. I mentioned how we are receiving power up to 1000 megawatt already from Nepal during peak season. It gives us the confidence that we can now plan to do bigger, more ambitious projects. And in tourism sector, which was again addressed in detail by one of the fellow panelists, again a very inspiring address, ma'am. We need to harness the synergies and develop these circuits, which you also alluded to, Buddhist and Ramayana circuits, among many other things. And here again, I am very happy to see that a separate session has been devoted to these issues. So all in all, I am very happy to be part of this effort to enhance our economic partnership. I once again thank the organizers and wish all the participants very productive deliberations. And before concluding, I would like to reaffirm India's keen interest and strong commitment to deepen and expand our special partnership with Nepal, which derives strength from our shared cultural and spiritual heritage and extensive people-to-people ties. We look forward to working closely with the government of Nepal and all other stakeholders in Nepal and India. Thank you very much. Thank you so very much, Honorable Munu Mahavarji, for your kind words and your guidance and your emphasizing on particulars that how Indo-Nepal relation could get better in coming days. And moving forward with the program, now I would like to invite Excellency Dr. Shankar Prasad Sharma ji. And after this, we have a very special one cultural program. So I would request to attend that as well. Now welcoming Dr. Shankar Prasad Sharma. एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ. So thank you so much. Because tomorrow is the International Language Day. The Bangladesh is doing a great program. 60 ambassadors, they have written the poems or some stanza, and it has also been translated into English. And the Bangladesh is celebrating this one as an International Language Day and encouraging everybody to speak their own language. So I thought maybe I'll start from Nepali. Our Ibraj Baralji, Everest Chamber का अध्यक्ष, Ambassador Munu Mahavarji, चन्द्र प्रसाद ढकालजी, हाम्रो FNCCI का अध्यक्षजी, अतुलजी, जसले यसलाई एकदम सहयोग गरेर हाम्रो नेपाली सबै कार्यक्रममा उहाँले सहयोग गरिरहनुहुन्छ. त्यसपछि हाम्रो Ankita Jaiswal, I think she was also here last year, and she is a great promoter of
indigenous food and indigenous craft. हाम्रो अरुण सुवेदीजी नेपालदेखि आइपुग्नु भएको छ र हाम्रो उमेशजी उहाँ अघि जनकपुर पनि भन्नुभयो एकचोटि, गोरखपुर पनि ल्याउनुभयो नाम। बट एनिवे अब यहाँ नेपालीको कोही रिलेटिभ इन्डियामा छ कि छैन भन्दाखेरि सबैको रिलेटिभ, अतुलको पनि रिलेटिभ नेपालमा हैन, सबैको रिलेटिभ। प्रोबेबली ओन्ली आवर एडिसनल सेक्रेटरी मुनु महावर, he doesn't have any relative in Nepal. Otherwise, most of the people either they have relatives in India or in Nepal. मैले पनि खोज्दै थिएँ, मेरो एउटा काका चाहिँ यहाँ वेद विद्याङ्ग महाविद्यालय भन्ने जोशी मठमा उहाँ प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो, अहिले हरिद्वार बस्नु भएको छ। म पनि दसैँमा टिका लाउन जान्छु यहाँ, त्यस कारणले हामी सबैको रिलेटिभ केही न केही यहाँ छ नै। अब सर्वप्रथम त यो कार्यक्रमको इन्सेप्सन, प्रमोसन र इम्प्लिमेन्टेसनमा हाम्रो एभरेस्ट च्याम्बर अफ कमर्स लाग्नुभएको छ। उहाँलाई एकदमै हार्दिक बधाई छ। केही कन्स्ट्रेन्टहरू पनि हुन्छन्, केही डिफिकल्टिज पनि हुन्छन्, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले यसलाई लास्ट इयरबाट सुरु गरेर कन्टिन्यू गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई एकदम हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यसचोटि हाम्रो पिएचडी च्याम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री को खास गरी अतुलजी र टिमले यसलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि हार्दिक बधाई छ। र अरू सबै यहाँको नेपाली कम्युनिटी जसले यहाँ चाहिँ हेल्प गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई बधाई छ। आज हामीले लास्ट इयर त हामीले 2 जना मिनिस्टरहरू ल्याएको थियौँ। वी आर भेरी सक्सेसफुल इन ब्रिङिङ 2 युनियन मिनिस्टर्स, 1 फ्रम नेपाल एन्ड 1 फ्रम इन्डिया। यसपालि के भयो भने हामीले एप्रोच गरेको अलि ढिलो पनि भयो, अनि दोस्रो चाहिँ एभ्रिबडी इज सो इन्भल्भ इन दिस एआई समिट हैन। यहाँ त त्यत्रो 20वटा भन्दा बढी हेड अफ द स्टेटहरू आउनु भएको छ। अनि हिजो त यहाँ पुरा दिल्ली ट्राफिक जाम, रिसेप्सन, डिनर सब चलिरहेको थियो। अनि करिब 45 जना मिनिस्टर र ठुलो डेलिगेसन आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ मिनिस्टर सिन्धियाजीलाई डाकेका थियौँ, तर उहाँ त्यसमा पनि बिजी र आज आउट अफ टाउन हुने भएको हुनाले उहाँ आउन सक्नु भएन। नेपालमा पनि हाम्रो अनिल सिन्हालाई पठाएको थियौँ, कल्चर मिनिस्टर, टुरिज्म मिनिस्टर। उहाँ पनि यो चुनावको कारणले आउन सक्नु भएन। अब नेक्स्ट इयर हामी फेरि यसलाई प्रयास गरेर अझ योभन्दा माथिल्लो लेभलको यो इनोग्रेसन प्रोग्रामहरू गर्छौँ। अब मैले आई डोन्ट ह्याभ टु एड एनिथिङ to the points that have been raised by all our previous speakers, but I just want to say a few things. एउटा के भने नेपालबाट अहिले आज धेरै आउनु भएको छ, हाम्रो एफएनसिसिआईको चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ। पहिलो कुरो त नेपालले पनि यहाँ अहिले धमाधम इन्भेस्ट गर्न लाग्छ। उहाँहरूकै अहिले एउटा फाइनेन्स कम्पनी मैले नोइडामा गएर जस्ट 2 weeks ago उद्घाटन गरेर आएको छु। बधाई छ, उहाँको फाइनेन्स कम्पनी यहाँ खोल्नु भएको छ इन्डियामा। And then they are hoping that after 5 to 6 years, it can be upgraded to a full-phased bank from Nepal. So I think that's a great achievement. That will be a great achievement. And number 2, हाम्रो यो 27 तारिखमा फेरि पिएचडी च्याम्बर अफ कमर्ससँगै हामी एउटा कोलाबोरेसन गर्दैछौँ आइटीको प्रोग्राममा। त्योभन्दा अगाडि नै हाम्रो साथीहरूले यहीँ हुनुहुन्छ अगाडि, उहाँहरूले एउटा आइटीको कम्पनी पनि यहाँ मेहरौलीमा खोलिसक्नुभयो हिजो अस्ति। त्यस कारणले नेपालीहरूले पनि यहाँ धेरै कामहरू अगाडि बढाउनु भएको छ। तर त्योभन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने अब हामी नेपालमा पनि अरू इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अपर्च्युनिटी छ। एभरेस्ट च्याम्बर अफ कमर्सको धेरै जति मेम्बरहरूले नेपालमा केही न केही इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ। तर एउटा समस्या यहाँ के देखिएको छ भने इन्डियन गभर्मेन्टले धेरै ट्रेड फेयरहरूमा कति ठाउँमा सित्तै स्पेस, कति ठाउँमा त थोरै पैसा पनि तिर्नुपर्छ दिएको छ, त्यो हामीले युटिलाइज गर्न सकेका छैनौँ। म समय समयमा आएको चिठी हाम्रो उमेशजीलाई पर्सनली पनि पठाइदिन्छु हैन, एफएनसिसिआईलाई पनि पठाइदिन्छु, तर उहाँहरू त्यति चाख राखेर आउनु भएको छैन। हुन त प्रडक्टको कम्पिटिटिभनेस नभएर पनि हुनसक्ला हैन, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। अनि अर्को कुरा जस्तो अहिले आइटीमा सायद हाम्रो जोइन्ट सेक्रेटरी यहीँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, सेक्रेटरी जोइन्ट सेक्रेटरी आउनु भएको छ र इन्डियन गभर्मेन्टले स्पेस दिएको थियो, तर अब हामीले लिन सकेनौँ। त्यो भनेपछि हाम्रो प्रेजेन्स एआई समिटमा खालि डेलिगेसनको रूपमा मात्रै भयो, स्टलको रूपमा हुन सकेन। हुन पाएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यी सबैको अलावा यो आइटीमा त अब अहिले अघि कुरा पनि भयो डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको। आज बिहान हाम्रो एकजना साथीभाइ मल्टिनेसनल कम्पनी नेपालको ले चाहिँ मल्टिल्याटरल अर्गनाइजेसन, उहाँले चाहिँ फोन गर्नुभएको थियो। सो अब इन्डियासँग हामीले एउटा होपफुली छिट्टै अब नयाँ गभर्मेन्ट आउन साथ त्यो डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको एउटा एमओयू
गर्ने विचार गरिरहेछौँ। त्यो एमओयू अन्तर्गत नै त्यसै अन्तर्गत रहेर यो मल्टिल्याटरल एजेन्सीहरूले ठुलो एमाउन्ट पैसा दिएर फेरि इन्डियन कम्पनीहरूलाई नै डाकेर केही इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा एउटा रिभोल्युसनरी काम डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट गर्ने विचार गरिरहनु भएको छ। मैले त्यसलाई एकदम स्वागत पनि गरेँ र यस्ता कुराहरू अघि हाम्रो एम्बेसडर मुनु महावरजीले धेरै कुराहरू भनि नै सक्नुभयो र यहाँ मैले डेटा हेरिरहेको थिएँ नेपालबाट इन्डियामा आएको सामानहरू लास्ट 7-8 मन्थ्स अथवा 1 इयरमा 137%ले बढेको छ। बढ्न नबढेको होइन, तर कहाँनिर मात्रै बढ्यो भने खालि एडिबल ओइल, सनफ्लावर ओइल, सोयाबिन ओइल मात्रै बढ्यो। अरू प्रडक्ट हेऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ मोरलेस 1-2% ग्रोथ मात्रै देखिन्छ। त्यस कारणले सिमेन्ट, यो चाहिँ भनौँ न हिमालयन प्रडक्ट्सहरू, अर्ग्यानिक प्रडक्ट्सहरू, अब हाइड्रो त छँदैछ होइन, यो बाहेक अरू अब आइटी पनि आई थिङ्क वी क्यान डु मच बेटर देन वाट वी आर डुइङ टुडे. So we can link up with bigger companies in India, just like I think we had this startup मेला हो। त्यस्तै अब सप्लाई चेनमा पनि हो, सप्लाई चेनमा अलिक गाह्रो छ, त्यति सजिलो चाहिँ छैन, किनभने हामीले यो भन्दै आएका हौँ 10औं-12औं वर्षदेखि, तर वी हेभ नट बिन एबल टु अचिभ अ लट इन दिस एरिया। तर जे एरियामा हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ, अघि कुराहरू आयो, टुरिज्मको सेक्टरको कुराहरू आयो, हाइड्रोको कुराहरू आयो, आइटीको कुराहरू आयो, and a few agro products, herb medicinal plants, जसको चाहिँ डिमान्ड अल ओभर द वर्ल्ड चाहिँ झन्डै मोर देन 20%ले ग्रो भइरहेछ। यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। टुरिज्ममा पनि हामी भन्दै आएको हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ, अनि प्रडक्टको डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ, यो सबै त छँदैछ, तर अवेरनेस गराउने कुराहरू पनि धेरै छ। जस्तो उदाहरणको लागि मध्य प्रदेशमै गएर तिमीहरूको यहाँ विक्रम सम्मत हामीले नेपालमा चलाउँछौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँको चिफ मिनिस्टरलाई पनि थाहा थिएन कि विक्रम सम्मत नेपालमा चाहिँ एज अ अफिसियल क्यालेन्डरको रूपमा चल्छ भन्ने कुरा उहाँलाई पनि थाहा थिएन। उहाँ पनि एकदम हाइली इम्प्रेस्ड हुनुभयो। त्यस कारणले यस्ता कुराहरू जस्तो कर्नाटकबाट हामी होइन पृष्ठहरू लिएर आउँछौँ पशुपतिनाथमा, यो कुरा कति मान्छेहरूलाई थाहा होला होइन। यति कुराहरू मात्रै हामीले भन्न सक्यौँ भने पनि मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ 10औं-20औं लाख मान्छे त्यसै एट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै बुद्धिस्ट एरियामा पनि अस्ति भर्खर यहाँ इन्डियामा यो रेलिकको एक्जिबिसन भइरहेको थियो। हाम्रोमा त ओरिजिनल रेलिक नै रहेछ, रामग्राम भन्ने ठाउँमा, जुन पहिला 4 ठाउँमा त्यो रेलिक्सहरू राखेको बुद्धको, त्यो 3 ठाउँको त सम्राट अशोक आउनुभएपछि उहाँले 84,000 ठाउँमा डिस्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो, झिकियो। तर नेपालको त्यो रामग्रामको रेलिक भन्ने चाहिँ आजसम्म कसैले छोएको छैन। त्यस कारणले त्यस्तो ठाउँहरू पनि छ, वी निड टु प्रमोट द्याट। सो यसको साथसाथै मलाई लाग्छ ट्रेडको एरियामा, इन्भेस्टमेन्टको एरियामा जे जति प्रोग्रेस भएको छ राम्रो छ, तर वी हेभ न्यू अपर्च्युनिटिज, न्यू एभन्युज फर कोअपरेसन। सो न यसको थिम नै कनेक्टिङ पिपुल, इन्हान्सिङ बाइल्याटरल ट्रेड भन्ने छ। यसमा अझै पनि हामी एउटा रोड म्याप बनाऊँ, जस्तो मैले हाम्रो एफएनसिसिआईको चेयरम्यानलाई पनि भन्छु कि यस्तो एउटा रोड म्याप बनाऊँ जसले गर्दा हाम्रो एक्सपोर्ट पनि इन्डियामा बढ्न सकोस् होइन, अनि यहाँबाट इन्भेस्टमेन्ट पनि अलिक बढी जान सकोस् भन्ने उद्देश्यले त्यस्तो रोड म्याप बनायो भने हामी त्यसलाई सहयोग गर्न पनि तयार छौँ एम्बेसीबाट। र अघि धेरै भनिसकिएको छ, अघि हाम्रो अङ्किता जयसवालजीलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो एउटा यहाँ फुड फेस्टिभल भएको थियो 2 वर्ष अगाडि, 1.5 वर्ष अगाडि, अनि एउटा किताब पनि निस्किएको थियो नेपालको चाहिँ कुजिन भनेर। त्यो किताब लिएर उहाँले चाहिँ आफ्नो लखनऊको एयरपोर्टको रेस्टुरेन्टमा रमादा इन उहाँले चाहिँ फुड पनि राख्नु भएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन फर द्याट वान। एन्ड देन त्यसै गरी हामीले आर्टिसनहरू प्रमोट गर्नुपर्ने, आई थिङ्क द्याट्स वाट वी निड टु डु एन्ड वी हेभ लट्स अफ अपर्च्युनिटी। अब यो हामी सबै मिलेर यसलाई सक्सेस बनाऊँ र अझ योभन्दा बेटर नेक्स्ट इयर गर्न सकौँ। धन्यवाद। Thank you so very much, Excellency. I believe all of our distinguished speakers have covered all the aspects, but one area which I would like to touch upon is cricket. Cricket could be a new era of diplomacy between Nepal and India, because we have seen
NPL in Nepal season 1, and we have seen NPL season 2 in Nepal. And since Nepal has qualified after 12 years in World Cup, and they have been appreciated from all the corner of the world. So I believe the way cricket is being getting popularity in Nepal, that could add an additional edge between India and Nepal relation. So we must take cricket as one of the very important aspects. And now I would request President of Everest Chamber of Commerce and Industries, Mr. Yuvraj Baral, to please welcome and felicitate all our distinguished guests at the dais. Mohan Karki ji, the General Secretary, is also coming along in welcoming and felicitating our distinguished guest for the day. नेपाली गौरव का प्रतीक ये ढाका टोपी के साथ आदरणीय मनु महावर जी का स्वागत कर रहे हैं। हम तालियों में कंजूसी कतई ना करें। मैं एक बार फिर से अनुरोध करूंगा। एक्सीलेंसी डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। चंद्र प्रसाद जी, Mr. State on जी, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये भी एक अपने किस्म का योगा है। It's good for the blood flow. Sri Atul Thakur ji, a very key player for successfully organizing this event. And not only this event, he is known for organizing multiple events between India and Nepal throughout the year. Give him a big hand, Mr. Atul Thakur. And we are glad to have Mrs. Kalpana Sharma ji, हाम्रो माझमा Mrs. Kalpana Sharma ji पाल्नु भएको छ। मैं अनुरोध करूंगा अंजू थापा जी से। Mr. Umesh Prasad Singh ji, Mr. Umesh Prasad Singh ji, Shri Arun Subedi ji, both are being felicitated by Shri ji. You
सम्मान कार्यक्रम पछि एउटा हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रम छ जसलाई मञ्जुश्री नृत्य भनिन्छ। नेपालको प्राचीन आध्यात्मिक विरासतको प्रतीक मञ्जुश्री नृत्य। बौद्ध परम्परामा मञ्जुश्रीको ज्ञान र प्रज्ञाको प्रतीकको रूपमा मानिने गर्छौं। यो नृत्य भन्दा अघि हाम्रो माझ पाल्नु भएका डिस्टिंग्विश गेस्टहरूको साथमा एउटा ग्रुप फोटो गर्दैछौं। मैं अभी बात कर रहा था मंजूश्री नृत्य के बारे में जो हम थोड़ी देर में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बौद्ध परंपरा में मंजूश्री को ज्ञान और प्रज्ञा के प्रतीक के रूप में माना जाता है और लोक कथाओं के अनुसार काठमांडू घाटी एक विशाल झील थी। मंजूश्री ने अपने ज्ञान खड्ग से चोभार की पहाड़ी को काटकर उस जल को बाहर प्रवाहित किया और इस पवित्र भूमि को मानव सभ्यता के लिए उपयुक्त बनाया। ये कथा हमें सिखाती है कि जब अज्ञान का अंधकार ज्ञान की तलवार से हटता है तभी विकास, समृद्धि और सभ्यता का उदय होता है। लुम्बिनी से बोधगया तक भगवान गौतम बुद्ध की यह पावन विरासत भारत और नेपाल को एक आध्यात्मिक सूत्र में बांधती है। आज जब हम व्यापार, निवेश और साझेदारी की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हैं, यह सांस्कृतिक प्रस्तुति हमें स्मरण कराती है कि भारत नेपाल का संबंध केवल सीमाओं से नहीं बल्कि साझी विरासत, संस्कृति और मैत्री से परिभाषित होती है। अब आदरणीय वेद जी को भी ये स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करने के लिए मैं आदरणीय मनन शाह जी को अनुरोध करता हूं। कोषाध्यक्ष मनन शाह जी। और सभी को अनुरोध है भोजन करके ही जाना है। हम लोगों ने आप सबके लिए एक ये नेटवर्किंग डिनर के रूप में अरेंजमेंट किया है। इससे पहले एक कल्चरल परफॉर्मेंस भी है, उसको भी मैं आप सबको अनुरोध करूंगा। बहुत ही प्रतिभावान कलाकार ने तैयार करके आए हुए हैं। यहाँ सबैलाई विनम्र अनुरोध छ डिनर गरेर मात्रै जानु हुनको लागि यो नेटवर्किङ डिनर स्पेशली हजुरहरूको बिचमा संवादको एउटा अवसर होस् भन्ने हिसाबले हामीले आयोजना गरेको हो। अब यो मंच खाली करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं। यहाँ एक सांस्कृतिक परफॉर्मेंस आगे होने वाला है। कल्चरल परफॉर्मेंस बहुत ही छोटा एकदमै छोटो छ, सानो छ। 5 मिनट 7 मिनट को छोटो परफॉर्मेंस छ। हजुरहरूले काइन्डली धैर्य गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध छ। And we are glad that today we have Shri Kiran Man Chitrakarji, a very distinguished personality who is very famous for his photography, and he carries Chitrakar legacy. A century through the lens, the visual journey celebrates the enduring artistic legacy of Chitrakar family, hereditary artists and photographers whose work spans over 100 years through a carefully curated selection of photographs from the fourth generation. His exhibition presents a rare visual archive of political transition, cultural transformations, sacred transition, and everyday life. For more than a century, the Chitrakar family has documented moments of historical importance and intimate human experience, creating an invaluable record of time, memory, and identity. Give him a big hand, जोरदार तालियों के साथ। इनके पोर्ट्रेट्स बाहर लॉबी में लगे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग जो है चित्रकार लेगेसी के बारे में जाने। दीर्घमान चित्रकार जी फ्रॉम 1877 till 1951, Ganesh Man Chitrakarji ji from 1916 to 1985, and continue the legacy. Kiran Man Chitrakarji is with us, and he's always there in all the Indo-Nepal events. We are glad to have him on the stage. जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं।
अगले कुछ ही मिनटों में हमारे बीच में मंजूश्री नृत्य की टीम होगी और आज के कार्यक्रम का ये आखिरी कार्यक्रम होगा और उसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर मोहन कार्की जी से कि इस कल्चरल प्रोग्राम के पश्चात वो जो है आज का धन्यवाद भाषण करेंगे और इस कार्यक्रम के पश्चात यहाँ पर डिनर की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले संपूर्ण अतिथियों से मेरा करवद अनुरोध है कि आप सभी लोग जो है डिनर के पश्चात ही जो है आज का कार्यक्रम यहाँ से छोड़कर जाएंगे। तो चूंकि हम कार्यक्रम के अंत अंत में हैं, मुझे दुष्यंत की कुछ पंक्तियां याद आ गईं क्योंकि ये कार्यक्रम भारत और नेपाल के संबंधों के बीच में एक नई ऊर्जा भरने के लिए है। तो दुष्यंत कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये कार्यक्रम जो आज का ये इंडो नेपाल एग्जीबिशन है, इसका सिर्फ एक ही प्रायोजन है कि हमारी ये कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जो भारत और नेपाल के बीच में जो प्राकृतिक संबंध हैं, जो ऊर्जा है, जो इतिहास है, उसको और अधिक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा जाए, नई जनरेशन को इसकी इंपॉर्टेंस बताई जाए। क्योंकि आज जब हम नेपाल के अंदर देखते हैं, हम क्या पाते हैं कि प्रत्येक नेपाली फैमिली में एक अमेरिकन ड्रीम है। तो जब हम देखते हैं कि नेपाल के बिल्कुल नजदीक 140 करोड़ के भारत में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पिछले एक दशक में हो सकता है, तो नेपाल में भी निश्चित रूप से वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक इस प्रकार के आयोजन आने वाले दिनों में जो है ये मील का पत्थर साबित होंगे। और इसी कार्यक्रम के क्रम में हमारे बीच में एक एक ऐसे आर्टिस्ट, एक ऐसे उदयमान कलाकार अपूर्व ओम जी हैं जो है देश की विभिन्न संस्थाओं से जो है सम्मानित हुए हैं। आज वो हमारे बीच में हैं। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर मोहन कार्की जी से, जो जनरल सेक्रेटरी हैं एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, वो अपूर्व ओम जी को जो है स्टेज पर बुलाकर सम्मानित करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ। He is a young, innovative artist and activist from Delhi who advocates for deaf inclusion into the mainstream. भारत के राष्ट्रपति, भारत के विभिन्न राज्य सरकारों से सम्मानित अपूर्व ओम जी हमारे बीच में हैं और एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको सम्मानित करते हुए तालियां थोड़ी जोरदार होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मंजूश्री नृत्य की टीम स्टेज पर आज आ रही है। जोरदार तालियों के साथ हम इन कलाकारों का, युवा कलाकारों का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे।
भैरव गणेश र मञ्जुश्रीको प्रस्तुति यहाँहरू सबैले पुनः एकपटक तालीको साथ एप्रिसिएसन गरिदिनु न अनुरोध छ। आदरणीय कलाकार भाइ बहिनीहरू, देहरादुनबाट लोक तरङ्ग एउटा नृत्य समूह छ जसको मोटो छ कला र संस्कृतिको जीवन। यो समूहलाई स्पेशल एप्रिसिएसनको लागि म महामहिम राजदूत ज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। कलाकारहरूलाई एकपटक पुनः म स्टेजमा आमन्त्रित गर्दछु र उहाँहरूलाई स्मृति चिन्हको साथमा अभिनन्दन प्रकट गरिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैले पुनः एकपटक तालीको साथमा अभिनन्दन गरिदिनु होला। हाम्रो यो कार्यक्रम निरन्तर भोलि र पर्सि चल्नेछ। कला र संस्कृतिका यस्ता सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू, एकदम लोकल कलाकारहरू, नृत्य,
लोकदोहोरी, झ्याउरे सबै प्रकारका प्रस्तुतिहरू छन्। यहाँहरू सबै आफू पनि उपस्थित भइदिनु होला, साथमा आफ्नो परिवारलाई पनि यो एउटा गौरवको अभिवृद्धिको एउटा प्रयास हो। हाम्रो समाजलाई पनि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट आर्थिक क्षेत्रबाट अगाडि बढ्नको लागि प्रेरित गर्ने एउटा प्लेटफर्मको रूपमा यसलाई विकास गराउने प्रयास हो। भोलि बिहान 9 बजेबाटै कार्यक्रम सुरु हुँदैछ, बेलुका 7-8 बजेसम्मको हाम्रो सेड्युल छ। यहाँहरू सबै आइदिनु होला। अनि सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा यो प्रोग्राम हामीले फेसबुक, हाम्रो एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजको फेसबुक च्यानलबाट पनि यसलाई लाइभ गरेका छौँ। युट्युब च्यानलमा पनि एभरेस्ट चेम्बर भनेर युट्युब च्यानल छ, त्यहाँबाट पनि लाइभ छ। यसलाई पनि सबैले सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध छ। ह्यासट्यागको साथमा सेयर गरिदिनु होला। साथमा आफ्नो आफ्नो पेजहरूबाट पनि लाइभ गरिदिनु भयो भने त्यसले यो जानकारी सबैलाई पुर्याउन सजिलो हुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म पुनः धन्यवादको साथमा डिनर गरेर मात्रै जानु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। बाँकी छ अहिले अन्जुजीको टाइम। ल पुनः एकपटक भोलि बिहान 9 बजेबाट कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि छन्, बौद्धिक बिजनेस नेटवर्किङ सेसन्सहरू पनि छन् र स्टल्सहरू बिहानैबाट आज बेलुकैबाट स्टल्सहरू सेटअप हुन्छ। यहाँहरू सबै हाम्रो अलग अलग प्रकारको नेपाली परिकारहरूका पनि स्टल्सहरू छन्, नेपाली ट्रेडिसनल प्रोडक्ट्सहरूका स्टल्सहरू छन्। यहाँहरू सबै सहभागी भइदिनु होला। यसमा सबैको उपस्थितिको लागि म पुनः अनुरोध र आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद।